हे कमी करू, वॉल्यूम कमी कर थोडा. चेक 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 चेक. बिल्डिंग मध्ये कोणी गेलं नसेल, फ्लॅट मध्ये वगैरे कोणी. थोडं अजून पुढे यायचंय का? युअर ओके, यू कम्फर्टेबल? हाय, नमस्कार. Should we start? Okay. So it's 15 minutes into the just 15 मिनिटं म्हणलं सेटल होऊया सगळे. ओके, सो वेलकम टू यशविन ऑनकॉर. मी सर्वेश जावडेकर, टेक्निकल डायरेक्टर विलास जावडेकर डेव्हलपर्स. आज सर्वप्रथम सगळ्यांना गणेश चतुर्थीचे खूप सारे शुभेच्छा. हा गणपती सण जो आहे 10 दिवसांचा, हा एकीचा असो, युनिटीचा असो, प्रॉस्पेरिटीचा असो, विघ्नहर्ता ज्यांना आपण म्हणतो, सगळे विघ्न नाश होऊन दे. आणि मला असं वाटतंय की आज छान दिवस आहे. गुड डे टू अड्रेस सम ऑफ द कन्सर्न्स अँड इश्यूज दॅट वर रेस्ड. गेल्या मीटिंग मध्ये अनफॉर्च्युनेटली माझी तब्येत बरी नव्हती, सो आय वॉज डाऊन विथ सम फ्लू. सो आय एम बेटर नाव, मच बेटर. सो म्हणलं आज आपण एक ही मीटिंग एक कॉल करू. एक युट्यूब लाईव्ह लिंक पण अपलोड केलेली आहे की ज्यांना जमत नव्हतं इकडे येण्यासाठी, दोज हू कुडंट कम, वी हॅव अरेंज फॉर ए युट्यूब लाईव्ह लिंक. सो once again I'll introduce my team also. This is my team of engineers, of architects, third party consultants from CQRA. We also have representatives from our facility maintenance team who have joined. We have our project in charge, Mr. Mahesh Anbule, who is here. He is working on this project since the excavation time. And along with him, he has a team of around 20 to 25 engineers and supervisors.
And we also have CRM team from Anand Pitre's team is also here. And I see a very nice attendance from all the Yashwin Encore buyers. मी आता जस्ट एक सोसायटीमध्येच होतो. पलाडिओ नावाची आपली एक सोसायटी आहे. सो तिकडे गणेश आरतीसाठी मला बोलवलं होतं म्हणून मला एक 10 मिनिटं थोडा लेट झाला. पण तिथली आरती संपवून मी आज आपल्या समोर आहे. So, all right. So I think let's start with our open house. So we had prior to this, we have shared a Google form in which we had asked you to fill up any issues or concerns that you may have, so that I can address it. And based on those Google forms, we have made a list of contents that we will be showcasing today. Can you all see the television? Can you view it? Or if you want, do you want to move on this side and balance it out over here, or you're okay? If you're okay, you're fine. Okay. So based on that Google form and the concerns that you have raised, the various issues that you have raised, we have made the list of contents. So first, we will be speaking about seepage, leakage, and waterproofing. I think that was the maximum number of queries were based on that, followed by plumbing. Then we have external painting. So what I decided is that apart from the queries and issues, I will also address some of the things that we have also done here. So it can be a more informative and a question and answers form. So after this, you're free to ask me any questions, anything that you want to ask. It's not going to be a monologue or man ki baat, as you know, some of you have very nicely put it. It's not going to be a man ki baat. It is going to be a dialogue. It's not going to be a monologue. So going forward, we have some of the engineering practices that we have followed at Yashwin, followed by tiles and grouting. That is something that we will be discussing today. We also will be speaking about the aluminum windows and doors, about society maintenance, how the maintenance will be done, and how the society formation, conveyance, handing over, till when VJ will be involved, what is the defect liability period. The anxiety levels have gone a bit high. It's absolutely understandable. I don't deny them. But we will be speaking more on the maintenance aspect as well. About PCMC water connection, that was another point which was raised. What is the number of connections that we have? What is going to happen with water? What is tanker ka kaise hoga? All these questions were there. What about borewell? What about its water? What about treatment? These were the questions. So I'll address that under the head of PCMC water connection. OC date was also a question that was asked. What is the formalities of OC? When will be getting the occupancy certificate? What will be the procedure for handing over of the apartment, etc. Then I will be also giving an update on the amenities. What form of amenities we will be, giving for podiums attached. So the nomenclature that we are following is that we have attached podiums. The building attached podium is what we are calling, and we have something called as a central podium. So this is the nomenclature that we will be using while describing what and when these amenities will be ready. Safety and security is also another point that we will be discussing more about, wherein, how is the visitor management going to happen? What access control do we have? Intercom systems कसे आहेत? CCTV network किती आहे? कुठल्या areas मध्ये CCTV आहे? Main gateचं कसं आहे, etc. So I'll be discussing in detail about safety and security as well. Then I think the next important issue is the road connectivity. What is the update on the upcoming road? काही प्रमाणावरती काम सुरू झालंय, काही प्रमाणावरती व्हायचंय. त्याच्याबद्दलचा काय अपडेट आहे? माझं आणि राहुल दादांचे काय चर्चा झाली, गव्हर्नमेंट बरोबर काय बोलणं चाललंय. This also I will be sharing in detail. Then there were questions on MNGL gas. I think that is also an important point that we will be discussing today on what have we planned, how have we planned,
the MNGL gas. Voter registration is something that we will be doing today. We had informed many customers to get in some documents. I'm sure you must have got those documents with you. We also have a voter registration desk wherein all you have to do is submit those documents to the representative, and we will make sure that your name gets listed in the voter list. Garbage chute was one more point that we've added to address how the solid waste management will be carried out for the project. Parking and signages was some queries, some questions that were raised on how parkings will be done. What about open parking? Whether open parking can be covered, not covered. These were some of the questions that were put forth. So I've included and covered that part as well. Internet is something which I will be discussing in detail because it's the fourth basic necessity now: food, clothing, shelter, and internet. So internet also we will be discussing in detail on how have we provisioned. As we speak, internet is live. I will come to that in detail over the course. And the third one was dimension checks. I mean, what is the how are we checking the dimensions, and what is the how to ensure that the carpet area as per agreement, carpet area on the ground, etc. There were a few concerns and questions that were asked. If I have left out anything apart from these 18 points, feel free to ask. Feel free to ask in this forum also. Yeah, and sorry, lobby pipes and passage pipes and the false ceiling. That was also one of the commonly asked question was, how are we going to hide those pipes, and what is the plan of action for them in the lobby? All right. So let's start with waterproofing as a point. So what happens is that waterproofing is generally done for wet areas. So which are your wet areas? So your toilets, dry balconies, and your terraces are defined or designated wet areas. Living room, kitchen, bedrooms are designated non-wet areas where it is not expected that water is going to remain stagnant. So when I mean it's a wet area, it means that there is going to be water that is going to be stagnant at that area. So we have done waterproofing uh, as per, so we've employed Dr. Fixit, which is a well-known company in the field of waterproofing. And we have done waterproofing for all these wet areas, which again, I include toilets, terraces, and dry balconies. So this is the product that we have used. It's called as Dr. Fixit Pedicrete URP. This is the technical information. And of course, I will be sharing this presentation to all. So no need of taking photos or anything. Our CRM team, we will make a PDF of this and we will send it to all if you want to go through it in detail later on also. So SBR latex is the product name that we have used. That's the technical data sheet of Dr. Fixit. The methodology for waterproofing, so there are these 9 steps that we do for waterproofing. First is called as a surface cleaning. So any area is first cleaned with a wire brush. It is grinded, all the excessive, any external area is well grinded and mopped and cleaned. And then we do a basic ponding test. So we put water on that bare slab first. We check where the leakages are coming or where the seepages are coming so that we can identify those cracks area or those loose areas. And after that, we do a fillet vata. Fillet vata means generally what happens is in any waterproofing for any wet area, the corners of the particular wet area are most prone for leakages. It's not the middle area, but more to do in the corner area. So we've taken double precautions for the corner area. Also, I would want to mention that all these photos are photos of Yashwin Encore and of not any other site. So these photos are 101% of Yashwin Encore only. And this is a practice, this is a backend database that we have maintained over the last 3 years along with CQRA.
And this is something that we have pulled out from our database to show you all. Because as you can see, waterproofing for all the wet areas is complete. So there is no way that I could have taken a photo of this otherwise. So these are all from our database. So this is a practice that we've been following since the time that we started these processes. So first we do a chemical coat. So chemical coat is done in two layers. Once it is done in X direction, and the other coat is done in the Y direction. The second coat is done in the Y direction. This again chemical comes from Dr. Fixit only. The base coat with water barrier at door. So typically if you see, there is, so when you're crossing over from the wet area into dry area, there is always a chance of water being going into the tile bedding from the wet area. Over time, what happens is that whenever that, say for example, over after 3 years or after 4 years, if some quantity of that grout comes off and the water were to seep inside, then you will typically find capillary action going on the walls of the toilet. So even if wherever that you're staying currently, you must have noticed this particular issue. So to address that issue, we have done a water barrier at the door itself. It is basically to cut the passage of water from the wet area into the dry area. Then we lay the internal drainage of the toilet. So it could be your EWC or your water closets or your basins. All these drainage pipes are laid. After that, we do a brick bat along with a filter media. So this filter media is essentially to drain out any excess water that may go uh, into the slab from the tile bedding. And brick bat is basically given to give slope so that whenever, if and all water comes down through the tile gaps, it is drained out by using that brick bat slope. So there's a filter media also that we have given. After that, we do a ponding test. So first ponding was done on the mother slab. The second ponding test is done on the brick bat again. So again, it is checked whether that chemical coat has been done properly. If there are any issues, then we would open that and rectify it. And then this is the second ponding test that we do for the wet areas. And this is done for all wet areas, all designated wet areas. After the ponding is done, 1 second, yeah. So this is we do the final coat on top of the ponding. This is the ponding test for the top terrace. Yeah, and this is the final coat. So after the ponding test on top of the brick bat, we again do a waterproofing layer on top of the brick bat layer. And then after this, the final waterproofing is over. When we are doing the final coat, we also take it 450 millimeters above the wall also. So that is called as a vata slope. So that also we do so that any water that may go into the bedding, to prevent capillary action, we use that 450 vertical surface is also then done waterproofing. All right. Moving on to terrace, top terrace, there were some customers on the topmost floor who have raised this point of what about the top terrace level? So for top terrace level, the methodology is the same, except there is a change because we give what is called as a mesh. So first, again, so the surface cleaning is done, the entire surface is grinded, it is properly, any loose material is scraped off. Then we do a crack filling. So wherever that we find cracks, again, these all photos of Yashwin Encore. These are not photos from any other site. These are from this site, and this is a part of our internal quality checks that I'm sharing with you all. So these are some of the crack sealing is done, the crack filling is done. Then we do an injection grouting. So wherever that we find that there are some loose pockets, then we do an injection pressurized grouting of cement and waterproofing material. Then we have plumbing sleeves so that the top terrace water drains properly. And then again, the same concept of fillet vata is followed here. Same concept of fillet vata is followed here as well. So all the corner edges are done in a chamfer so that the additional waterproofing layer is given at the corners also.
Then we do a chemical coat again. So this is also Dr. Fixit product of chemical coating that we do. This is the additional mesh that we give because this particular area is exposed to the atmosphere. So there is a lot of heat gain that happens in the day and in the night. So there are chances of slight cracks or cracks being developed. So to avoid that, we use this mesh only for the top terrace where there is a lot of cracking that may happen. So this prevents and it ensures that our terraces do not leak anywhere. Then we do a level marking for the final coat to be done. Then again, this, as I was mentioning, for brickbat, we use a line dori to ensure that the proper slope is given, so that even if there is any water that may seep through the top layers, it is drained off. May seep through the top layers, it is drained off using that slope. So the main function of the of the brickbat is to ensure that the slope is given to the waterproofing. This is again a typical radial pattern in which we lay so that water gets thrown out of the slab. Again, ponding test is done to ensure that this ponding test is done for good 6 to 7 days. The entire top terrace is kept filled with water. 7 days, the entire top terrace is kept filled with water. And we check if there are any loose pockets anywhere to make sure that the top terrace slab does not leak. And then we do a final coat as we're doing. And then we do a final coat as we're doing it for the wet areas in the apartment. So a final coat is done wherein again it is mixed with Dr. Fixit waterproofing compound in this final coat so that the topmost layer becomes completely impervious. Again, this entire thing is kept filled with water for a period of 4 to 6 days to ensure that even if there is any further issue of any water seepage or leakage, then this particular test we do it. All right. So this was about waterproofing for the top terrace, the toilets, the attached terraces, and the dry balconies. Now I'll come to the reason why we have seen seepage and leakage when you were visiting your apartment. Correct? Because if we are doing this, then why do we have leakage or seepage? Is the standard question. So what we identified, in fact, we when we were going through the checklist, we identified that there are 4 root causes of why there were seepage and leakage in the apartment when you were visiting. And then when we saw all these areas of seepage and leakage were designated dry areas. They were not areas where waterproofing was done. These are designated dry areas. So the number one reason for the root cause for seepage and leakage
was because when we were cleaning the apartments, when we were deep cleaning the apartments, the joints, generally what the process or the methodology of doing work is that first you lay the tiles with spacers, because expansion and contraction, you need to have that spacer in the middle. After the tiling work is done, you generally do an acid wash, and after acid wash is done, because acid basically removes all the cement from the tile surfaces. After acid wash is done, then you do a deep cleaning, and after deep cleaning is when you do the grout filling, and then you do a mopping, is what the sequence of activities is. Now in this case, what happened in the first root cause was that, and this is expected, it is not something that is a defect, but it is expected. So what happens is, when you are mopping it without the grout, or when you're deep cleaning without the grout, the water enters into the bedding of that particular tile, and then through that bedding it kind of goes down into the slab. Now since these are designated actually wet areas, these are designated dry areas, there is no waterproofing on the slab of the living room or the bedrooms, which is why in some isolated places you will find some patches, because of the deep cleaning activity that was going on the upper floors. It is not that this happens to all the apartments. There may be a case where one or two, there may be new construction workers who are there, or there may be a case where there may be a few incidences, isolated incidences, wherein the water must have spilled onto the floor, or there may be stagnancy of water at the time of deep cleaning. So that was the first root cause. The second, can I get some water, please? Yeah, still recovering a little bit. Okay. The second root cause is the upper floor. So, if you remember, sometime in July, there was torrential rains. Uh, rains were coming in from all directions. High intensity rains we were witnessing high intensity rains, and our aluminum window contractor, our manufacturer, our supplier. So when we started fitting those windows, the topmost floor windows were balanced, and at that time, the rains kind of lashed us. And on the 22nd floor, there was water inside the flat. And again, as I mentioned, the grout filling was not done at that time. We were still under construction. And that's why you can see some form of minor seepage. I wouldn't call it a leakage. There is a difference in a leakage and a seepage. So that was a seepage that happened. And then after we have fixed the window, these seepages have dried out. The third is the third root cause that we find is the plumbing testing and the end cap that came off at an isolated locations. Now, so this happened typically in the month of August, wherein there were some photos that were shared. Uh, in the sometime around first week of August, we received the delivery of the water pumps, and these water pumps were fixed are on the at the basement level into our water tanks. And when we were doing our plumbing testing, so in case of testing, these water pumps are typically high pressure pumps, because they have to pump water all the way up to the topmost floor. So when these pumps were pumping in water into the overhead tank, some of the valves were open at that time, because generally the process is that when you fill in the overhead tank automatically starts putting in water into the downtake pipes, and these downtake pipes then put pressure on the CP fittings. That is how the hydraulics typically works. But in these cases, somewhere the CP fittings were also not fully fixed. It was still under progress,
And then when we did the plumbing test, we put the water on the first floor, on the in the overhead tank. And then the water, when it came down, in some apartments where CP fittings was not fixed, we generally put a end cap. So any pipe that has an outlet, there is something called as a PVC end cap. So this PVC end cap was fixed initially, but because of some pressure related issue, those end caps came off. Generally the process is that you replace these end caps with the actual fitting, ज्याला आपण नळ म्हणतो. सो ती जी कॅप असते, ती कॅप जनरली होल्ड्स द वॉटर फ्रॉम नॉट कमिंग आउट. सो काही ठिकाणी असं झालं की एकदम म्हणजे मे बी 5-6 ठिकाणीच झालं असेल की ती एंड कॅप निघाली आणि ती निघाल्यामुळे पाणी एकदम त्या फ्लॅटमध्ये शिरलं. सो ह्याच्यामुळे काही, मी जसं म्हणलं की दिस इज अनदर थर्ड रूट कॉज ऑफ वाय this has happened. The fourth one was that the taps, in some cases where CP fitting was fixed, somewhere the taps were also left open at the night. कारण आम्ही पंप जेव्हा चालू केले, CP fittings एकाच वेळेला आलं, and there was a lot of rush of materials, of laborers, of customers, of everyone coming into the project at the same time. So we were quite overwhelmed with the amount of people who were entering, going in and out of the project. So बरेचदा होतं असं की कधी कधी टाकी एकदा भरली की ती परत खाली होते, पाणी परत खाली जातं, मग ती परत भरायला लागते. झालं असं की एका वेळेला ती टाकी समजा एमटी असेल, कारण पाणी समजा संपलं आणि समजा आपण तो टाकी भरली नसेल, तर बरेचदा काय होतं की काही लेबर्स असतील, वर्कर्स असतील, आपण पण स्वतः असाल, तर एकदा आपण समजा फ्लॅटमध्ये गेल्यानंतर समटाइम्स व्हॉट वी डू की आपण नळ चालू करून बघतो. सो वी ट्राय टू चेक इफ दी वॉटर इज कमिंग ऑर नो. आणि समजा पाणी येत नसेल तर आपण बंद करून नाही जात, ओपनच राहतो चुकून. आणि जेव्हा पाणी येतं वरती, तेव्हा ते पाणी जे आहे ते पाणी त्या फोर्स मधून परत जे ओपन असलेले जे टॅप्स आहेत, त्या ओपन असलेल्या टॅप्स मधून परत इट कम्स आउट. अँड देन इफ देर इज सम डर्ट that is left in the trap, in the PVC trap, then the water kind of overflows over the basin and then it goes on the floor. So there were isolated incidences. Again, these are isolated incidences that have happened, because of which the water has seeped into the tile bedding and it has shown as a seepage onto the into the khalcha flat, in the lowermost flat. Now, when after this we did a review of all the complaints that you have raised on email. Uh, right now, there is no seepage that you see anywhere. I have checked. My team has also checked. Apart from a few, apart from a few incidences, there is no seepage that we can see. असेल तर ते पण ड्राय होत असेल, because sometimes what happens is if you have identified the root cause and if you have plugged that root cause, then it takes some time for the material to actually drain off all the water. And this season being July August being the wettest season, it is not the most conducive seasons to dry out the moisture that is there in the wall or in the POP. So it will take some time for complete dryness, but the process has started. All these seepages are drying out, and fortunately we have identified the root cause. So it is not a failure of the waterproofing, because these are designated dry areas in which these minor seepages have happened. So uh, so these are the four root causes that we find to the main reasons for the seepages. I'll come to internal plumbing. Yeah, yeah, we can have questions on this. Please go ahead. Mike there. If you can introduce yourself also, so that on karna sir. Second mic on kar. Okay.
So, my name is Ashwini Sharma. I'm owner of A1204, and I am 204, right? And I'm engineering graduate. So I have a fair idea about the civil engineering because we studied a couple of semesters civil engineering studying, right? Right. So I have a couple of points and then a live example. Right. So the first point is it's good to follow the engineering best practices. What you said, the civil engineering, right? But I was expecting at least some the science you applied at the time of when Aditya was giving a presentation. He mentioned 3 years ago we have given a science where the wind is flowing in Pune, so that it's a windy. So we have given the two windows in each flat or each room. Correct, right? And the lighting also, so that you will get maximum lighting in each room, right? So this kind of science you applied at the time of the designing, right? So we are expecting the same kind of things, like, when you distinguish dry and the wet area, at least because the POP and the maximum furniture are in the so-called dry area, right? And that will be more harmful if you have a seepage in bathroom. ज्यादा कुछ नहीं होगा, रूफ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा टेबल नीचे आएगा पानी. But if it is a bedroom and if you have done the furniture, it will make you more damage than the bathroom on the or the dry balcony, right? So the fixing cost or the waterproofing cost, if you include in the so-called dry area, that would be good, because that is a more harmful than having a seepage in the dry balcony or the bathroom. So that is the first point. Second thing is, I have a live example. I have three seepage in my flat. It's a 204, right? Two were rectified. One is still I observed today morning. And the point is, water is not coming from top to bottom, it's coming from bottom to top, which is, right? And I have done the furniture and everything. And my internal painting is also done now, right? And after that, I'm getting the seepage. So that will be leaving the patch there, which will not look good because I've already done the painting, second round. And third is, I'm worried about my POP work and the furniture work, because as you said, the dry area is not checked. Then there's a more issues might be in the future, getting those water seepages from top to bottom, and may impact our so-called very good furniture done or the POP work. Yeah, that's all. So, good 2 points. I'm sorry, I forgot her name. Ashwini ji. Yes, yes, yes. Yes. So, regarding your first issue of waterproofing in the dry areas, that is not something that nobody does. It is not expected to do any form of waterproofing. The simple reason is that your living room and your bedroom are designated dry areas. It is not expected water to be stagnant. It's okay to wipe the floor with mop. Mopping will not have any form of leakage or seepage. Nobody is going to also have a shower in the living room or in the bedroom. We have designated areas for that. So, which is why waterproofing never is done in that areas. Regarding your second point of, sorry, yeah. But that is unforeseen. No, no, we cannot do contingencies for that. It's not a standard practice to do waterproofing at the dry areas. Yeah. So what we're doing is, when we are giving possessions, see, what happens also is that many times we generally would leave our apartment locked and go out. Correct. In such situations, I have observed, because we are maintaining almost 16 societies as of now. And my experience is that when you're leaving it out, and if if you've given it on rent, bachelors, non-bachelors, the way they use, it's very different how an owner will use naturally. Now, in these cases, typically, if there is dirt that is given in the wet area also, I have seen areas wherein the rainwater pipe was choked. देखो कचरा था उसमें, निकाला ही नहीं था. एक का फर्नीचर चल रहा था, वो फर्नीचर उसने वो आउटलेट पे डाल दिया था, तो पानी अंदर आता है. तो पानी अंदर आने के बाद दिख जाता है, और दिखने के बाद हमको फोन आता है
कि सर ऐसा ऐसा हुआ है. The point is what distinguishes VJ is our post possession service. Is what something that I will vouch upon, and we also have a very strong facility maintenance team. We have an internal quick response team. We have also the society office is 100% active since 3 months prior to possession. We have our society manager also with us today. He is looking at each and every process, each and every system for a period of 3 months. So what happens is that even if there is an isolated incidence of any leakage or any seepage that may be coming in, we have a very transparent method of MyGate system. So VJ is 100% on MyGate. You can take a photo, put it on MyGate. Our team will be there. We will resolve that issue. Now, what happens is that, as I mentioned, that dry areas are not meant to be waterproof because it is not designed to take any stagnant. The cost is not the question. I'm just telling you what is the standard. नहीं होता है, नहीं POP dry होता है. So the gypsum that we have used, so the gypsum, no, even if it is POP, false ceiling, any furniture dry होता है. Only if, abhi now if you have used material such as MDF, for example, in your furniture work, वो ऐसे नहीं तो तैसे खराब ही होने वाला है. अगर आप अच्छा मटेरियल यूज करके अगर इंटीरियर का काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा. So my thing is that if you experience any leakage or seepage, highlight to us quickly. Many times we ignore it. Even me as a homeowner, as even I stay in a society. My wife is also here today. Shruti is also here. Many times हम भी डिले कर देते बोलने के लिए कि बाबा एक यहाँ पे कुछ तो एक टपक गिर रहा है. लेकिन वो जो है वो अगर आप टाइम पे अगर हमें बताएंगे, then we will be very quick and very efficient to resolve these issues. So point number one, dry areas में waterproofing is not done anywhere in India as per IS codes. कभी भी किधर भी नहीं होता है. It is not expected that water remains stagnant in that area. And moving on to your second point of damping of the wall. So there are two reasons why this dampness आता है in the lowermost. Many of you must have also seen where you're staying right now. मेरे खुद के घर में भी थोड़ा सा dampness आता है. So the reason is that whenever water goes into your जिसको हम बोलते हैं bedding, टाइल का जो माचन हम बोलते हैं ना, तो माचन में जब भी पानी जाता है तभी पानी goes into the and starts pushing pressure on the wall. And if you are an engineer, you must be understanding the capillary action. So because of capillary action, the water kind of raises up to a height of not more than 9 inches above the floor. Maximum 1 feet तक के वो capillary action से पानी ऊपर आता है. In our case, we have RCC walls, number one. So जो dampness आपको दिख रहा है, it's only at the superficial edge. It is not inside the wall per se. There are two types. One, when you have a blockwork, and two, when you have an RCC wall. So if it is reinforced concrete, then जो seepage जो है जिससे capillary action आता है, that does not penetrate deep into the wall. It's only in the surface. That 12 mm, 13 mm का जो gypsum plaster है, खाली वो area में हमको seepage ऊपर capillary action आता है. And the gypsum is such that even if it remains wet for a certain period of time, nothing happens to it. It again dries off. So allow us some time. All these issues, as I mentioned, this season is such that things are taking some time to dry. Once they dry off, nothing will happen. Even in future, even if there is something that may happen because of this, our team is here to fix that issue. अगर कुछ patch, अगर paint करना है तो we will be doing that painting also. My only concern is that report these things in time. What you guys are doing now, excellent. I'm really happy the way that you have all brought these issues to us. It is a sign of a very aware home buyer, very good. But do this even post possession. Many times हम delay कर देते हैं कि अरे छोड़ दो ना, क्यों बताने का? नहीं बताओ. जितना जल्दी आप हमें बताएंगे, उतना जल्दी our response team will come and will fix that issue.
ऐसा नहीं होगा कि देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्ट्स। इंडिया में कोई बिल्डिंग नहीं है कि जिसमें डिफेक्ट्स नहीं आते हैं पोस्ट पोजेशन। कोई भी, मेरे खुद के बिल्डिंग में है, आप जहां पे रह रहे हो, आई एम श्योर इवन इन योर बिल्डिंग देयर मस्ट बी एटलीस्ट 20 डिफेक्ट्स दैट वी मे बी सीइंग, बट द क्वेश्चन इज वेदर यू विल बी गेटिंग सर्विस। एंड एज VJ I assure you of the best services because we are highly dependent on your word of mouth। बिकॉज अगर हम आपको सर्विस देंगे तभी आप हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, तभी हमारे आगे के जो प्रोजेक्ट्स है वो बिक जाएंगे। सो वी आर एब्सोल्युटली, वी आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट एंड दीज टू आई वाज होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। या जैसे कि आपने बोला कि डैम्पनेस ड्यू टू नीचे जो आपका मार्चेंट किया हुआ है उसके वजह से वो सीपेज आ रहा है लोअर वॉल्स पे, राइट? तो ग्राउटिंग हो चुका है, करेक्ट? ग्राउटिंग 2-3 महीने से चल ही रहा है, मतलब उसके पहले ही हो चुका है, राइट? उसके बाद भी अभी तो इन्होंने पोजीशन लेके शायद कितना टाइम हो चुका है, 1-1.5 महीना हो चुका है। उसके बाद वहां पे तो वाटर लॉग हुआ नहीं होगा, करेक्ट? तो उसके बाद भी मार्चेंट में से पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है? So before possession there must be deep cleaning that was done. After deep cleaning, during the time of deep cleaning, the water must have seeped into your bedding, correct? फिर हमने उसको किया होगा, फिर आपने जब पोजीशन लिया तभी नहीं दिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी चल रहा था, इट वाज क्रॉलिंग देयर, द वाटर वाज क्रॉलिंग देयर, और लेने के बाद वो ऊपर सरफेस आया। इट टेक्स टाइम। वाटर, एनी लीकेज और एनी सीपेज, आज हम पानी गिरा देंगे और कल जाके हमको दिखेगा, ऐसा होगा ही नहीं। It takes, my experience is that it takes anywhere in between 30 to 60 days for any seepage to come visible. And thereafter, once you have identified the root causes, it takes anywhere in between 30 to 60 days for the water to dry. And it depends seasonally, because right now it may take some more time because the weather is such, but otherwise during dry season 15 days may it gets dried off, and once it dries off nothing happens again। उसके बाद नहीं होता है। This is typically the last few months before handover when the whole process of deep cleaning, plumbing, I mentioned all the root causes जिसकी वजह से ये होता है। I can understand कि dry areas में आप waterproofing नहीं करते हो, but what is the reason behind that? Why you have used cement grouting instead of epoxy grouting? Because epoxy grouting अगर आप use कर सकते थे तो chances are less in case कि सीपेज के इश्यूज ड्राई एरियाज में आए, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे आए, तो उसका एक So epoxy grouting is done in wet areas, and epoxy grouting is not done in the dry areas. There are two reasons. One, epoxy is expensive, तो मुझे मेरे बजट का भी ख्याल रखना है। Two, it is not expected that that area is going to be wet, because ऐसा नहीं है कि वहां पे ठीक है चलो हम पानी पी रहे, पानी गिर गया तो कुछ सीमेंट ग्राउट को होगा नहीं, you will get it mopped up. So it is not a requirement where to do epoxy grouting in this area. Also, what happens is epoxy is very hard on the laborers to do it. मतलब उनको भी बहुत तकलीफ होता है वो epoxy का काम करने में ना। It's very tough on the laborers to do it. One, it has लगाते टाइम पे बहुत precautions लेनी पड़ती है। Second, it's a very उसका जो health के जो hazards है वो भी है। तो we try to limit as much as possible that particular material because we use it specifically for dry areas and for wet areas. जितने I don't want to comment on other projects, but maximum projects जो मैंने देखे हैं, आप जहाँ पे रह रहे हो वो आप आपके जो existing जो owners है उनको भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे epoxy है या नहीं। The answer is that very few projects you will find in Pune who actually do epoxy for wet areas also, and we are one of them. And वहाँ पे हम cost नहीं देखते हैं because we want to make sure that these wet areas, आज मैं I can tell you that there will not be a single case of leakage in the waterproofing areas. जो 22nd जो topmost floor पे है, अगर हमारा काम ही खराब था तो टॉप टेरेस से लीकेज आता था, एक भी लीकेज नहीं है टॉप टेरेस में। अगर काम खराब था तो जो अपना वेट एरियाज है वहां पे लीकेज दिखते थे। अभी बारिश इतना था, टेरेस के जो अपने अटैच टेरेसेस है उसके नीचे हमको धब्बे दिखते थे, वहां पे भी एक भी नहीं है।
तो the reason is that these are taken in that form. नहीं, वहां पे वाटरप्रूफिंग हम जो पैसेज है, नहीं पैसेज को हम नहीं करते हैं. अगेन इट इज अ डेजिग्नेटेड ड्राई एरिया. द रीजन इज दैट वी हैव कवर्ड द टॉप विद डक्ट कवरिंग. तो इसीलिए वहां पे पानी अभी दिख रहा है आपको, लेकिन आई थिंक A2 के लिए we've already finished the top terrace duct covering, so there is not expected that water is going to come there. Again, it's an area which is going to be mopped. It is not expected that water to be stagnant, so that's the reason. जी. Sir, we had previous discussions and I a bit of heard this one and over the online. Sir, only assurance today we have some situation. I know you might have your own reasons. What I am not getting is anything in writing, be it for the quality of plywood. Okay. नहीं, plywood को आएंगे ना. सीपेज लीकेज से What I'm saying is, last पॉइंट पर जाएंगे सर. 18 पॉइंट है. टाइम आपने assurance दिया था कि आपको रिटर्न में रिप्लाई मिलेगा. किस चीज का? सभी जो क्वालिटी का इशू रेज किया था आपने. ये मैं भेज रहा हूँ ना आपको. ये this PPT I'll be sharing it with you all. This PPT is I'm sharing it with you all. आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? अश्योरेंस चाहिए कि जो है ना, मैं दे रहा हूँ ना. प्रोजेक्ट में उससे आज प्रॉब्लम दिखता नहीं, कल दिखेगा. तो वी हैव समथिंग टू से दैट VG has given this stand at that time. हाँ. फॉर एग्जांपल आज आप बोल रहे हैं कि छत से नहीं आया. हाँ. पर अगर बाथरूम में से पानी पूरे फ्लोर्स में नीचे के फ्लोर में जा रहा है, हाँ. दैट इज अ कॉज ऑफ. नहीं, बाथरूम से नहीं गया है. बाथरूम से नहीं. बाथरूम से पानी पूरे 101 फ्लोर पे पूरे पे पानी उसी नहीं, बाथरूम से नहीं गया था. मैं वही बोल रहा हूँ आपको. जो पानी गया है वो बेसिन से गया है, और वो भी जो कॉमन बेसिन है वहां से गया है. और अगर गया भी होगा तो बाहर अंदर बाथरूम के जो टैप्स है या जो वाटर क्लोजेट है उसमें कैप रहता है. वो कैप हमने क्लोज करके रखा है ताकि जो डाउनटेक्स है वो डाउनटेक्स चोक ना हो. कंस्ट्रक्शन के टाइम पे काफी धूल मिट्टी रहती है, तो कभी कभी क्या होता है कि टेंडेंसी होता है कि वो ट्रैप में से कुछ कचरा विचरा डाल दो. तो वो ना करने के लिए हम वो सील कर देते हैं पहले, और पोजेशन के टाइम पे, ऑक्यूपेंसी के टाइम पे हम वो कैप ओपन कर देते हैं. तो इसीलिए अगर पानी बाथरूम में गया है तो उसको जाने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए वो बाहर आ गया रहेगा. नहीं, पानी मैंने पूरा 201 पूरा देखा है. इशू जो हुआ था आई केम पर्सनली, और बाकी भी मैंने देखे हैं. 201 के केस में स्पेशली बाथरूम में थोड़ा पानी एक्यूमुलेट हुआ ऊपर वाले के में, वो पूरा नीचे वाले के यहाँ पर, पुरुषोत्तम के यहाँ पर टपक रहा था. बेडरूम में, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना. उसका रीजन ही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यों हुआ है. उसका रीजन ही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको. पर वो 1-2 बाल्टी पानी नहीं था, एक ड्रम पानी था. हाँ ना, लेकिन ऊपर के फ्लैट में अगर पानी स्टैग्नेंट होता है ड्राई एरिया में, हाँ, तो नीचे तो आने ही वाला है ना. ठीक है, नीचे आ सकता है. अब उसमें क्या हो रहा है कि साइड के दीवार से भी पानी आ रहा है उस नीचे वाले के फ्लोर. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ. तो उसका जो साइड का जो है उसका भी मैंने आंसर अभी दिया कि जो कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है. इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा समय लगता है. जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं तब डीप क्लीनिंग में वो जॉइंट में से पानी नीचे जाता है. नीचे जाने के बाद उसको रिफ्लेक्ट होने में 30 डेज लगते हैं, और जब ग्राउटिंग करने के बाद उसको सूखने के लिए वापस 30 दिन लगते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स टेक अ लिटिल टाइम, बिकॉज एज आई मेंशन कि ये वेट ड्राई एरियाज में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू आर हैविंग वाटर इन द ड्राई एरिया. करेक्ट. तो जब आप पोजेशन लेंगे, पोजेशन के टाइम पे और जब ओसी के टाइम पे अगर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स भी अगर यदि समझो आता है तो वी आर हियर टू गिव यू सर्विस. ये बात आपको अगर राइटिंग में चाहिए तो हम राइटिंग में एनीवेज अग्रीमेंट में दिया ही है. एग्रीमेंट में सर मैंने भी पढ़ा है क्या लिखा. अब अगर ये करें, हर चीज ऐसा है. हमारा जो बाहर का टेरेस है उसका लेवल हमारे फ्लोरिंग से इतना नीचे है. बारिश के पानी को तो हम रोक नहीं सकते, वो बालकनी में आएगा. वो पानी जब बालकनी में आएगा वो जो आपने चैनल दिया है वहां से पानी पूरे जाना चाहिए. जाएगा कहाँ जाएगा? हमारे फ्लोर के नीचे. नहीं. जो बारिश का जो पानी है वो चैनल में से रेन वाटर के पाइप में जाता है. नहीं, वहाँ कोई पाइप नहीं है. नहीं, रेन वाटर का जो पाइप, जो बालकनी है उससे हॉल अटैच्ड है. हॉल और उसके बीच में जो स्लाइडर है, उस स्लाइडर के जिससे नीचे से आसानी सबके यहाँ पानी नहीं, उसमें नहीं जाएगा. मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जो हमने जो वाटर बैरियर जो दिया है ना, इफ यू सॉ दैट वाटर बैरियर, डिड यू सी इट? मैंने अभी प्रेजेंटेशन में ही बताया था कि वेट एरिया और ड्राई एरिया के बीच में हमने एक वाटर बैरियर दिया है. ये जो वाटर बैरियर है, दिस वाटर बैरियर बेसिकली कट्स ऑफ द
marchant between the wet area and the marchant with the dry area. ये वाटर बैरियर हमने दिया है. हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अपर वाले जो मेंबर है उसके नेग्लिजेंस की वजह से अगर उसने क्लीनिंग ठीक से अगर उनके अपार्टमेंट क्लीनिंग अगर नहीं किया है, कचरा आके रखा है, बारिश के टाइम पे वो कचरे की वजह से अगर पानी नहीं जाता है तो पानी अंदर आएगा. तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है. उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ. लेकिन उसमें आप अगर हमारे एफएम टीम को, फैसिलिटी मेंटेनेंस टीम को अगर क्विकली इन्फॉर्म करें तो हम जाके वो पर्टिकुलर फ्लैट में जाके वी विल मेक श्योर दैट दैट वाटर ड्रेन्स आउट एंड दिस थिंग पर्टिकुलरली ड्राइज ऑफ. तो अगर अभी हम कोविड का सिचुएशन लें जो कि होना नहीं चाहिए एक्सटेंड, अगर हो गया सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो डू यू एक्सपेक्ट कि वी गिव द कीज टू द मैनेजमेंट कि मेरा घर देखते रहना, अगर बारिश का पानी बालकनी में आ जाए तो उसको साफ करते रहना? नहीं, बारिश का बालकनी नहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज बारिश का जो पानी है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रेन ऑफ. मैं खाली इतना अपेक्षा करता हूँ कि जो मेंबर्स है वो आपके घर की ख्याल रखे. दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन होम. दे शुड मेक श्योर दैट व्हेन यू आर लीविंग आउट ऑफ स्टेशन, से मान के चलो आप 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो जो एरिया है जहां से पानी नीचे जाने वाला है वो एरिया बस आपको साफ करके जाना है, साफ रखना है. वो उतनी तो आपकी जिम्मेदारी है ही है एज अ मेंबर. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक चाबी, इफ यू वांट टू कीप विद आवर मैनेजर, विद द सोसाइटी मैनेजर, यू कैन कीप इट. इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव वन सेट ऑफ कीज कि जिसमें सोसाइटी मैनेजर को आप दे सकते हैं, वो आपका कॉल है. बट एज ए रिस्पॉन्सिबल होम यूजर it is expected that you keep all the rain water pipes non-choked. आपके अगर फर्नीचर काम कर रहे हैं बाद में, many times I have seen interior carpenters and fitters literally ठूसिंग भूसा in that pipe. अब वो पाइप क्या क्या झेल पाएगा? ऐसा तो नहीं होगा. तो ऐसे समस्या जो है in the first 6 months आते हैं, over a period of time these issues get resolved. लोगों को भी समझ में आता है, लोगों को भी आदत लग जाती है. तो सर लास्ट चीज कि अगर नेग्लिजेंस नहीं है बट अभी सब लोगों ने फ्लैट अपना लिया नहीं है, बाद में आता है, तो वीजे का क्या हमारे लिए स्टैंड है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे विल नॉट से कि आई एम आउट नाउ, इट इज योर प्रॉब्लम, नहीं, और या ऐसा फिर नहीं. तुम पैसा दो, मैं काम करा देता हूं लेकिन पैसा तुम्हारा लगेगा, नहीं, क्योंकि उसमें- आज किसी के भी फ्लैट देखिए, खुले नहीं है. देखिए मैं बोलता हूँ आपको कि दिस क्वेश्चन आई गेट आस्क्ड मेनी टाइम्स एंड नॉट जस्ट एट यशविन बट एट ऑल द 16 मेंटेनेंस प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग. विजय का स्टैंड बड़ा सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल स्टैंड. वेरी आई हैव थॉट दिस आउट ओवर द लास्ट 20 years. व्हाट वी डू इज एनी कंप्लेंट दैट वी गेट ऑन माई गेट, वो कंप्लेंट को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं. फर्स्ट, अगर वर्कमैनशिप डिफेक्ट है. सेकंड, अगर मटेरियल डिफेक्ट है. तो ये दोनों चीजों का आज मैं वीडियो पे भी बोल रहा हूँ, 101% रेक्टिफिकेशन की जवाबदारी और फाइनेंशियल जो भी उसका जुर्माना है वो विजय विल हैव टू बेयर 100%, नो डाउट. थर्ड जो है वो बड़ा क्रिटिकल है. थर्ड जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस एंड अब्यूज बाय द ओनर. मेनी टाइम्स आई हैव सीन टेनेंट्स, मेनी टाइम्स आई हैव सीन homeowners who are very irresponsible with the way that they are handling their own flat. तब वो केस में आइसोलेटेड केसेस बहुत कम है. मतलब नाउ वी हैव अ डेटाबेस ऑफ अबाउट 6000 अपार्टमेंट्स जिनको हम सर्विस दे रहे हैं. वेरी रेयरली इट हैपेंस दैट दिस इशू हैज क्रॉप्ड अप and this issue we have asked the customer to pay. Hardly one case in the last 5 years, hardly one. So but I don't want to generalize it that आप कुछ भी करो विजय पैसा भरेगा, ऐसा नहीं होगा. If you are a responsible home user, we are a responsible home builder. इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. And 101%, if there is any workmanship defect, any material defect, VJ stands here and Sarvesh Javadekar also stands with you. No problem. रिगार्डिंग मैंने कुछ सीआरएम के रिस्पॉन्स देखे, उन्होंने कहा है कि पोछा भी बहुत गीला पोछा नहीं लगा पाओगे आप. नहीं, ये स्टैंड है उनका कि पानी नहीं, मकान धोना तो भूल ही जाओ, दिवाली पे भी धो नहीं पाओगे आप, सिर्फ पोछा लगा सकते हो उस पे, और वो भी सूखा पोछा. नहीं, ऐसा नहीं है. आप गीला करो, गीला पोछा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सीआरएम कभी कभी थोड़ा सा डर जाते हैं.
आपका इतना प्रेशर बनता है उन पे, थोड़ा सा वो डर जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं नहीं 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 पोछा भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बात है, आप बिल्कुल पोछा कर सकते हैं, वेट मॉप से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ एज ए रिस्पॉन्सिबल होम ओनर See, वो कुछ तो कुछ सर- समस्या जो है वो टेक केयर देखिए, करेंगे, सर, आप बिल्कुल सब कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। नहीं रिस्पॉन्सिबल तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम पे लोन चल रहा है, हमको ईएमआई भरनी जी है, तो बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल तो है ही। सम ऑफ देम मैं बट उसमें ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई कहे कि एक मुद्दा पानी भी नहीं गिर सकता नहीं और गिर गया तो वो ओनर रिस्पॉन्सिबल हो गया उस दिन नहीं से। नहीं 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 यार, इतना भी मैं हम अच्छे इतने बुरे लोग नहीं है। नहीं वो तो मैं भी नहीं हूँ, नहीं कोई भी नहीं है, नहीं, पर और एक मान बार- के चलो कहीं पर भी कुछ होता भी है तो वी आर ऑलवेज हियर। हम इतना 100-200 रुपए के लिए हम नहीं झगड़ा करेंगे आपसे, और मुझे करना भी नहीं है, हम आपको सर्विस भी देंगे। लेकिन मैं क्यों कहता हूँ, जो सी वाला जो थर्ड जो एस्पेक्ट है ना, फर्स्ट टू केस वर्कमैनशिप डिफेक्ट, मटेरियल डिफेक्ट, वीजे गारंटी 100%, नो प्रॉब्लम, हम है, चाहे आज हो या चाहे 10 साल के बाद हो। मैं रेरा को देखता नहीं हूँ, रेरा इनफैक्ट सेज ओनली 5 years, लेकिन वी आर गिविंग सर्विस इवन आफ्टर 5 years, इवन अंटिल 10 years वी आर गिविंग सर्विस। तो हम वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स नहीं है, और यही ट्रस्ट आपने हम पे दिया है। I understand the kind of trust that all you have put on us, and this is a responsibility that you put on us. So while I appreciate some of these issues and these questions that you are asking, I'm very humbled also, because generally questions किसको पूछते हैं कि जो competent है उसी को questions पूछेंगे ना। अगर competency नहीं है तो questions पूछ के फायदा क्या है। तो I agree, I am taking all your questions in very good spirit, but I want to assure you on this. यस सर, तो लास्ट चीज जो पिछला मीटिंग हुआ और इस मीटिंग के पहले वी हैव रेज्ड लॉट मेनी कंसर्न्स। आई एग्री, आई विल सी पीडीएफ, पर अगर एक क्लियर रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ प्लाईवुड की क्वालिटी हमने रेज की थी, डोर्स की क्वालिटी रेज की थी, इफ वी कैन गेट ए रिटर्न कंपैरिजन एंड एश्योरेंस की, जैसा उस दिन बोला गया था कि ये कजारिया से भी अच्छा है, ये जो भी प्लाईवुड का आई एम ओके, सी वी डोंट नो ना फ्यूचर किसका क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो एश्योरेंस देगा तो हमको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि वी हैव इन्वेस्टेड आवर मनी इन द राइट हैंड्स, इन द राइट ब्रांड, और ये एश्योरेंस है कल को कुछ भी होता है, इफ somebody is able to prove कि आपका नेग्लिजेंस है, वी आर रेडी टू टेक इट, बट अदरवाइज उसके अलावा। और सर लास्ट चीज, आई डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ये जो रिसेप्शन में और ये पाइप्स का है ना, सर आप नहीं थे मेरे कंटेंट्स के टाइम पे मालिक, मैंने ये तो 20 चीजों पे मुझे बात करनी है, तो उसमें इंक्लूडिंग है। या सर ये आपने वाटर प्रूफिंग जो किया है जी अपर फ्लोर पे, तो ये पोडियम में भी किया है? जी, पोडियम में भी किया है है ना, पोडियम का भी अलग से पीपीटी है। सो सेंट्रल पोडियम एंड दो साइड के पोडियम में पूरा वाटर प्रूफिंग हुआ है, yes. इसमें कोई लीकेज नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, अभी और- कहाँ दिख रहा है, नहीं है, नहीं, इसके आगे ऊपर। आगे नहीं, आगे भी नहीं आएगा। ओके। नहीं है। और जो आपने ड्राई एरिया विद इन द फ्लैट बोला है, हमने वाटर डाल दिया तो वो सीपेज होगा, और कहाँ से सीपेज होगा? नहीं नहीं नहीं, वाटर का डालने का मतलब कैसा है कि अगर आप, पोर कर दिया हमने पूरा वाटर, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो वो गैप से जाएगा या गैप फिर- से जाता है, गैप से जाता है। तो इससे तो वो गैप्स हमने अभी सीमेंट ग्राउट की है, हाँ, correct? okay. अभी ग्राउटिंग किया है। Okay. अगर आप 4-5 बादली फेंक के अगर आप होटल खाना खाने जाओगे तो 100% आते टाइम पे नीचे वो पानी सब नीचे गया होगा और वो नीचे कहीं तो निकल आएगा। वही बोल रहा हूँ सर, अगर आपने सीमेंट ग्राउटिंग नहीं किया होता, इपॉक्सी ग्राउटिंग किया होता, ये भी अवॉइड कर एक सकते बार थे। क्यों करना है आपको? 4-5 बाल्टी नीचे नहीं, डाल नहीं। के आपको होटल खाना नहीं, क्यों करना है? हमेशा नहीं करना है हमको, इंसान नहीं हमेशा नहीं, एक बार भी नहीं करना है मालिक, वैसा मत कीजिए, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। मैं वही कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ आपको। कि इपॉक्सी जो सीमेंट ग्राउटिंग है, हाँ। दैट सीमेंट ग्राउटिंग इज गुड इनफ टू हैंडल 1 or 2 buckets that we put, and when you're going to mop it. See, generally another question that I get कि हम तो दिवाली में हमारे घर पे पूरा घर ऐसा पूरा बाल्टी डाल के हम वॉश करते हैं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज these are high digital vitrified tiles. यहाँ पे आपको उतना मेहनत से स्क्रबिंग करने की जरूरत नहीं होती है, because this already has a glazing on top of it. तो उसमें इतना पोचा भी करेंगे फिर भी उतना ही दिखेगा, आप अगर वायर ब्रश से इतना घिसोगे तो भी उतना ही दिखने वाला है। सो ज्यादा उसमें फर्क नहीं दिखेगा, इसलिए डोंट डू दैट। मेरा यही कहना है, ये भी अवॉइड कर सकते थे अगर हमने इपॉक्सी ग्राउटिंग किया होता। इपॉक्सी हम नहीं करते सर, नहीं करते। कितना खर्चा आता है सर? मुझे लगता है खर्चे 3 का से सवाल 4 नहीं है, it's- आप बजट के बारे में बोले ना? नहीं epoxy नहीं, grouting। वन ऑफ द रीजन, मैंने दूसरा क्या कहा कि मेरे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसको तकलीफ होती है, Okay. उसको तकलीफ होती है, वो वन ऑफ द रीजन है। लेकिन सेकंड मेन रीजन इज दैट इट बर्न्स योर आईज। कभी आप इपॉक्सी ग्राउट हाथ में लेके देखो, इट बर्न्स योर आईज, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज इट। मेरे कंस्ट्रक्शन वर्कर को तकलीफ होती है। ओके, ये आप मेंशन करेंगे क्या मेल में कि बर्निंग होता है, ये सब होता है? पीपीटी इज विथ यू सर,
मैं किसी कैसा होता है, मैं हर एक को ईमेल करते बैठूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, हम जो तो क्वेरी इसीलिए- रेज कर रहे हैं जी, उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है नहीं, उसके, मैं वही कह रहा जो इसने रोहित ने भी रेज किया नहीं, है। मेरा एक है कि मैं हर एक को ईमेल के द्वारा हर एक को, बिकॉज व्हाट हैपन माय pattern that I see is that same question gets copy pasted and you are all sending the same things, same words, same emails. So which is why I thought open house अच्छा है, सबके queries almost same है. सर मैंने तो पूछा हम था, आके मैंने we epoxy can grouting का पूछा जी। था मेरे फ्लैट के लिए, तो 3 to 5 के खर्चा आ रहा था, तो मुझे नहीं लगता इट इज नहीं, खर्चे का सवाल नहीं है, खर्चे का एक सवाल नहीं है, इट इज ऑफ कोर्स सवाल है, लेकिन द लार्जर इशू इज दैट इट इज मेरे कंस्ट्रक्शन वर्कर को तकलीफ होती है. ओके। Okay, okay. जो 50 क्वेश्चन पिछली बार जैसे 25 क्वेश्चन थे, अभी भी 25 और इसलिए आपको कॉमन मेल मिल रहा है बिकॉज एवरीबडी नोज वी हैव मैं आपको एफएक्यू करके दूं, हाँ, चलेगा? FAQ नहीं Okay. कि these are the common question raised. ये स्टैंड है बीजे का चलो, done. इन टर्म्स ऑफ अश्योरेंस Done, ऑफ done. क्वालिटी, जैसे हमने सीमेंट पे रेस किया था, स्टील पे रेस किया, ठीक है। फाइबर पे किया, प्लाईवुड पे किया, ठीक है। इनका जो भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी एश्योरेंस मिला कि वो एक्सपो हो गया, लेकिन एक्सपो के बाद आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. नहीं, पीडीएफ दिए ना आपको, आपको एक सर्टिफिकेट देता हूँ वर्क का, तो वो सर्टिफिकेट में क्या लिख के चाहिए आपको? नहीं, सर्टिफिकेट क्या प्रूव करता है? नहीं नहीं, आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए? नहीं, जो भी आपने लास्ट टाइम बोला था कि व्हाट आई एम यूजिंग इज बेटर देन व्हाट आई हैव शोन यू इन द आइदर इन द वो जो टेम्पलेट है उसमें, हाँ। या आप, और हमको उतना ही चाहिए कि हाँ भैया कचरिया या जो भी प्लाईवुड के नाम थे उनसे अच्छा ऑलरेडी है. लास्ट टाइम तो दिया ही है ना सर? नहीं, दिया कुछ भी नहीं है. अच्छा, दिया नहीं है, ठीक दिया है, कुछ भी नहीं, विल शेयर इट, विल शेयर सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन से सिर्फ. ओके ओके ओके, किसी को कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशंस मिला है. चलिए, लेट मी व्हाट आई सजेस्ट इज इफ सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यू, मे बी 3-4 लोग, इफ वी कैन सिट इन द ऑफिस कि आपको सर्टिफिकेट किस फॉर्म का चाहिए, तो वी विल वर्क इट आउट म्यूचुअली, एक बार फैसला करेंगे कि भाई ऐसा सर्टिफिकेट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो हम वो, मैं सर्टिफिकेट पर्सनल साइन से मैं आपको देता हूँ. या I don't have a knowledge of this construction and all that facts, but मेरा question बहुत ही simple है, and being a housewife, I just wanted to ask a very simple question. Currently, I'm staying in Mumbai, and every year I do दिवाली के पहले हम लोग पूरा घर धो के, पूरा पानी डाल के साफ करते हैं, and it is very common. अगर सेम अगर मैं यहाँ जब शिफ्ट होंगी, अगर मैं करूंगी, तो आर यू सेइंग लीकेज होना ही होना है? नहीं, see, कैसा है, there is a way in which you are going to put water. Again, as I mentioned, you can use a wet mop. I understand the PPT. I understand all the conversations. Yeah. That's fine. Yeah. The question from a housewife perspective, Yeah. if I'm doing the same thing, और वो रूम में तो नहीं होता था. हाँ. In fact, मेरे बेटे का बर्थडे था, and हाँ. we keep the tap open, and it was continuous 4 hours पानी water हाँ. was running out. But nothing happened to the entire flat. Nothing happened to the ground floor or the first नहीं floor. नहीं, उसमें मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप पाइप से अगर फ्लैट धोंगे तो चलेगा नहीं. मैं आज के डेट में धोती हूँ. नहीं, नहीं, that's तो मैं वही कह रहा हूँ. Are you saying the constructions in my current home? नहीं नहीं, I don't know your current home, ma'am. I don't know. What I'm trying to मैं say वही is कह रहा यहाँ हूँ, पे as a नहीं responsible home user and in Yashwin Encore, my expectation is that you will use a wet mop. Is what you can use. That If is- you want to it's simple, pour, it's a simple अगर water पानी डाल के practice. साफ करना है तो भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन पानी गिरने के बाद उसको खाली जल्दी से उसको मॉप अप कर लीजिए. So it's a simple message from you कि अगर पानी रहता है 2 या 3 घंटे ज्यादा, तो लीकेज होना ही होना है. नहीं, होना ही होना ऐसा ही नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जो पहले हुआ था that was because the joints were open, और joints open होने की वजह से पानी नीचे गया है, करेक्ट? अभी हमने joints तो सारे बंद की है, और joints बंद करने के बाद आप खुद यूज कीजिए, आप अभी कितने घंटा पानी रहता है वो मुझे भी नहीं मालूम, बट इट इज अ डेजिग्नेटेड ड्राई एरिया, इट इज नॉट सपोज टू बी वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे 3 घंटा 4 घंटा वो वहां पे पानी होना, एक्यूमुलेट होना डिजाइन नहीं है, तो वैसा ना करे. But of course, feel free to use a wet mop, use 1 or 2 buckets of water to mop it, we're fine with it. I think, Ella did.
same question around the kitchen, right? So like a lot of ladies will use a lot of water and all, right? Especially in the kitchen and the related area to the dry balcony, right? Where your washing machine and other things are there. Don't you think, I mean, at least kitchen पे वो कर लेते, क्योंकि जहाँ आपका vegetable धोते हैं, right? उसके नीचे भी lot of flats I have seen, right? I've lived in Bangalore, I've lived in here as well, Bombay as well. Like वहाँ पर उस area में issue होता है, तो So generally, again, as I mentioned, your main washing sink is kept outside in the dry balcony. The kitchen sink, the vegetable sink जो है वो अंदर है, जिसमें expected है कि vegetables धोना है. अगर kitchen के time पे अगर कुछ पानी में अगर नीचे गिरता है तो it is expected that you will mop it up. It is not expected that you will leave that water there and then go away. So 1 घंटा 1.5 घंटा nothing happens, but it is expected simple home user है कि बाबा अगर पानी गिरता है तो हम उसको उठाएंगे, because it also is a risk कि बाबा कुछ अगर issues ना हो. So my suggestion is that even if it is kitchen or even if it is living or bedrooms, अगर पानी गिरता है, cleaning के हो, non cleaning purpose हो, तो उसको mop कर ले as early as possible. Don't test कि भाई हाँ अभी मैं पानी डाल के यहाँ पे देखता हूँ अभी कितना टाइम पे यहाँ पे लीकेज होने वाला है, ऐसा ना करे. हमको रहना है यहाँ पे, we all want to stay here. So my sincere appeal and request is that. Yeah, I think हाँ. I'm a homeowner at the 22nd floor, so I can say that for the top terrace, the waterproofing is good. But what about the sides? And I'm coming there. It's in the part of my second presentation. because I have a photo from the terrace where I can see that the water is pouring down from the sides. हाँ, second photo में है, मैं आपको दिखाता हूँ. Right. And I don't know if this comes under the water seepage and leakage part. It does. But I noticed there was a gap between the window frame and the wall. I will tell you from that. the outside. It is there. It's a part of upcoming slides in the aluminum window section that I will be speaking about. So the gap is there. I will purposely. explain. I will explain. Okay. Anything on seepage and leakage, otherwise we can go ahead. There are many other topics that we want to discuss. वो topic पे आके I will discuss your question. Okay? Okay. हाँ, पीछे मागे देना एक. तो वो पूछना था कि एपॉक्सी ग्राउटिंग आप नहीं करवा के दे रहे हैं, पर ये जो 3 to 5,000 का खर्चा ये हम लोग तो अफोर्ड कर पा रहे हैं. तो अगर हम करवा ले, क्योंकि ये एक एंजाइटी वाला इशू है जो आप फ्लैट देने के बाद भी वो बहुत टाइम तक चलने वाला है हमारे दिमाग में, क्योंकि ये हमारे खुद के फ्लैट पे हुआ है. तो हम अगर करवा ले ऊपर एपॉक्सी ग्राउटिंग, जो एग्जिस्टिंग जो ग्राउटिंग हमने किया है वो जब 5 साल के बाद जब थोड़ा थोड़ा वेयर ऑफ होना चालू होगा उसके बाद आप कर सकते हैं, या फिर आप पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन के बाद आपको करना है तो आप कर सकते हैं आपके हिसाब से. पर फिर वो ऊपर वाले हमको अलाउड नहीं करेंगे कि आप आके इपॉक्सी ग्राउटिंग हमारे फ्लैट पे, या टाइम नहीं देंगे, तो वैसा नहीं होना अच्छा चाहिए. ऊपर वाले इसमें नहीं नहीं, हमारे ऊपर जो रह रहे हैं वो हमको अलाउड नहीं करे बाद में कि नहीं हम नहीं करने, अभी सब हमको सामान उठाना पड़ेगा. नहीं सब तो आप नहीं करवा सकते हो. आप दूसरे के फ्लैट में जाके कैसे ग्राउटिंग कर सकते हैं? नहीं, ऊपर करवाना ही पड़ेगा ना. नहीं ऐसे आप नहीं, ऊपर वाले फ्लैट में जाके आप- कैसे कर पाओगे? नहीं, क्योंकि लीकेज तो ऊपर से ही हो आता ना, है. तो करेक्ट है. सो मैं वही कह रहा हूँ कि लीकेज नहीं आएगा. मैं वही आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट लीकेज विल नॉट हैपन इफ यू आर डूइंग द सीमेंट ग्राउटिंग आल्सो. नहीं, So- सपोज वो एक एंजाइटी एलिमेंट रह रहा है. हम So चाह रहे anxiety हैं- element ठीक है, तो वो- आप मत करवा के दीजिए, इट्स ऑल फाइन. पर अगर हम करवाना चाहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट लेके करो. हाँ, तो वो जब वो उनका पूरा सेटअप हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो मैं एंड वही कह रहा हूँ. तो अगर हम अभी करवा ले जिनको नहीं, करवाना है, वो आप इंटरनली बात करके आप पोजीशन ले लो. पोजीशन के बाद आपको म्यूचुअल कंसेंट लेके इफ यू वांट टू डू इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एज लॉन्ग एज यू हैव टेकन द पोजीशन एंड यू गॉन अहेड. मुझे कोई इशू नहीं है. अच्छा. और सर एक था कि किचन आप बाकी सब ठीक है, हम बेडरूम में मॉपिंग वॉपिंग सब करेंगे, बट जो मैं एज अ हाउसवाइफ, मैं खुद भी हाउसवाइफ हूँ, पर किचन तो सर हम महीने में एक बार
धोते ही है, वो बहुत अंदर अंदर तरीके से खराब होता है, वो मॉपिंग से नहीं होता है साफ, जिसको एक बार ब्रशिंग अच्छे से लगता है। तो कीजिए ना, कोई इशू नहीं आएगा। सो ब्रशिंग कीजिए, खाली उसको वाटर को स्टैग्नेंट ज्यादा टाइम ना करे, अच्छा। क्योंकि ये जो टाइल्स है, दीज टाइल्स आर विट्रिफाइड टाइल्स। पुराने जमानों में जब सीमेंट टाइल्स होती थी ना, मोज़ेक टाइल्स, नहीं क्या छोटे छोटे वो दाने वाले टाइल्स, तो वो दाने वाले टाइल्स को घिसना पड़ता था, क्योंकि उसमें वो कचरा कूड़ा अटकता था और उसको फिर वो साबुन लगा के, निर्मा लगा के उसको घिसना पड़ता था। और वो ये वाले टाइलों में ऐसा नहीं होता है। इवन इफ यू वर टू यूज अ सिंपल वायर ब्रश, स्कॉच ब्राइट लेंगे, उसको भी अगर करेंगे, सो इसमें स्क्रैच फ्री टाइल्स है। स्कॉच ब्राइट लेके, वायर ब्रश लेके, बस 2-3 मिनट में भी ये सारी चीजें हम साफ करके ले सकते हैं। ठीक है। और सर, जो ये सीपेज और लीकेज के लिए जो वाटर स्टैग्नेंसी टाइम है, कि ये इतने टाइम तक पानी रहने से ये लीकेज आ सकता है, तो वो कितना, वो बता दीजिए, तो वो एक डर निकल जाएगा कि सबको लगता है पानी डालेंगे और लीकेज आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, इट्स कमिंग समथिंग, सो दैट टाइम इज रिक्वायर्ड टू। नहीं, टाइम ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है मैम। जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट, अगेन एज आई मेंशन, आफ्टर सीमेंट ग्राउट कोई ऐसा टेस्ट करता नहीं है कि भाई चलो अभी हम पानी डालते, स्टॉप वॉच करते कि अभी कब आएगा, ऐसा नहीं है। It takes anywhere in between 40 days to 60 days for that particular thing. Seasonal भी होता है। Many times in the month of March, April, May, जब हाई ड्राइनेस होता है ना, तब पानी सीपेज होने से पहले इवेपोरेट भी हो जाता है। सो ऐसा नहीं, ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम शेड्यूल नहीं होता है। सर, जे फ्लॅट्स बिलो द रिफ्यूज एरियाचे खाली जे फ्लॅट्स असतील, आता जर पाऊस जर आला तर पाणी ऑटोमॅटिकली राहणारच आहे तिथं, मग त्या ठिकाणी कसं करताय? आता तुम्ही जसं म्हणता की ड्राय एरिया आहे, तर तिथं तुम्ही ई प्रॉक्सी करायला नाही, पण आता रिफ्यूज एरिया आहे, मग तिथं कोण राहत नाही. नाही, रिफ्यूज एरियाला आम्ही इपॉक्सी करून घेतोय, कारण रिफ्यूज एरियाला आता पण केलं का तुम्ही करायचा विचार? नाही करणार आहे, चालू आहे, इन प्रोसेस आहे. रेफ्युज एरियाला आम्ही करून घेणारच आहोत, ठीक आहे. कारण शक्यता आहे तुम्ही म्हणताय तसं. पण आतापर्यंत रेफ्युज एरियाज पण सगळे ओपन आहेत, पण तिकडनं पण त्याच्या खाली मला नाही वाटत सीपेज किंवा लिकेज कोणत्याही प्रकारचं आलेलं आहे. आणि जरी भविष्यात आलं तरी पण आम्ही आहोत. आता सगळंच ब्रह्मज्ञान झालं आणि सगळंच सुटसुटीत झालं असं होणार नाही, मी असा दावा करत पण नाही. ठीक आहे. पण आम्ही निश्चित तुमच्या सोबत आहोत, की कोणत्याही प्रकारची सर्व्हिस लागली तरी विजय तुमच्या बरोबर खांद्याला खांदा उभा राहून थांबणार आहे. ठीक आहे सर, पण रिक्वेस्ट आहे की आम्ही करून घेऊ, तो एरिया आम्ही करून घेऊ. ठीक आहे, थँक्यू सर. जी. त्याच्यावरती एक साइडला मी म्हणजे रूम बनवलेली आहे, सेकंड साइड रूम नाही आहे. सो दॅट इज कम्प्लिटली ओपन एरिया अँड यू एक्सपोज टू वॉटर सिम्पली. सो पावसामध्ये नॉर्मली त्याच्यावरती पण म्हणजे भरपूर पाणी साचतं, बट जो खालचा आमचा रूम आहे बेसिकली, मी तिथं कधी म्हणजे सीपेज वगैरे फिनॉमिनॉन लास्ट 5 years मध्ये पाहिलेलं नाही. सो माय क्वेश्चन इज की इवन दो त्या टाइल्स मधून पाणी खाली गेलं, बट आपला जो स्लोप जो स्लॅब आहे, इज इट नॉट इनफ कॅपेबल टू होल्ड दॅट वॉटर? नाही. सो कसं असतं की तुमचा हा जो आउटडोर एरिया तुम्ही म्हणताय तिकडे मे बी वॉटरप्रूफिंग असेल. मी नाही, तुमचं nothing, घर because बघितलेलं नाहीये. नाही, मी पण स्वतःच आहे, मी वरती गेलेलं नाही. सो आउटडोर एरिया असेल आणि तुम्ही म्हणताय समजा पाणी साठवून राहत असेल, तर आय एम 100% शुअर तिकडे खाली किती जुनं घर, एक साधारण 2016 मध्ये बांधलेलं आहे मी ते. सो मग त्याच्यात वॉटरप्रूफिंग केलेलं असेल, शक्यता आहे. कारण एवढं पाणी साचून राहिल्यानंतर खाली वॉटरप्रूफिंग नसेल तर शक्यता नाहीये. मला तुमच्या एक्झिस्टिंग घराबद्दल मी अगेन व्हिजिट केल्यानंतरच मी सांगू शकेन. घरी बोलवलं तर मी येईन पण चहा प्यायला, काय विषय नाही. पण बघून सांगता येईल, असं थोडंसं ऑड आहे, मला सांगता नाही येणार.
नाही बिकॉज ऍक्च्युली कसं मी स्वतःच ते करून घेतो. म्हणजे मी स्वतः उभा राहिलो त्यावेळी. गुड गुड. त्यावेळी म्हणजे मी वॉटरप्रूफिंगचं असं मटेरियल प्रोक्युअर नव्हतं केलेलं. हा. सो असंच काय वॉटरप्रूफिंग झालं आपण एक टेस्ट करून बघू, मी पण येतो. चांगलं काय काय मटेरियल वापरलं आम्हालाही सांगा. नाही पण आपलं जे मटेरियल आहे ना इथलं हे खरंच चांगलं आहे. चांगले क्वालिटीचे स्लॅब्स आहेत. M30 M40 ग्रेडचे सगळे स्लॅब्स आहेत. रिइन्फोर्स कॉन्क्रीटचे स्लॅब्स आहेत. आपला स्वतःचा बॅचिंग प्लांट इकडे होता. त्या बॅचिंग प्लांट मधून आपण केलेलं हे सगळं कॉन्क्रीट आहे. आणि शिवाय या सगळ्या कॉन्क्रीटचे आपल्याकडे हे सगळे टेस्ट रिझल्ट्स आणि टेस्ट रिपोर्ट्स पण आहेत त्याच्या स्ट्रेंथ संदर्भातले. सो खूप सुंदर कॉन्क्रीट आहे. मी जेव्हा इंजिनिअरिंग जेव्हा झाल्यानंतर मी जेव्हा काम चालू केलं तेव्हा मी 4 वर्ष फक्त कॉन्क्रिटिंगच करत होतो. सो मिक्स डिझाईन असो, त्याच्या संदर्भातले बारकावे असो, सिमेंट कंटेंट असो, ह्या सगळ्या गोष्टी मी स्वतः खूप जवळून मॉनिटर करतो. आणि आमची टीम पण गेले 20 वर्ष हेच काम करतायत. सो एखाद ऑड इन्सिडन्स असतो, पण मला इनफॅक्ट पहिल्या 4 वर्षात स्वप्नात कॉन्क्रीटच यायचं झोपताना पण, जेव्हा मी साईट इंजिनियर होतो तेव्हा. सो डोंट वरी, चांगलं काम आहे, सुंदर काम आहे. एखाद ऑड लिकेज सीपेजच्या घटना होऊ शकतात. मी असं म्हणत नाही की तुमचे प्रश्न जायज नाही आहेत, 100% जायज आहेत. पण ह्या संदर्भातलं म्हणून तर मी आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलोय. विल गो अहेड. येस, माईक द्या. हॅलो. अच्छा इथे आहे का? बरं बरं. त्याच्यानंतर ह्यांचा टर्न नक्की बरं का अक्षय. Yeah, I want to continue the point that she mentioned. So you said about the mutual consent, right? For the epoxy thing. If everybody is ready to give you the mutual consent now only, and we pay you the amount as well, as your workers are highly trained, so can you get it done for us? No sir, we will not do it. Why so? No, we will not do it. Your workers are नाही, trained. आम्ही नाही करतायत. मी तुम्हाला एजन्सी देतो, तुम्ही एजन्सीच्या कडून तुम्ही पोझिशन घ्या आणि पोझिशनच्या नंतर तुम्हाला जे करायचं आहे, तुमचं घर आहे, तुम्ही ओनर आहात, तुम्ही मालक आहात, तुम्ही सोसायटी आहात, तुमच्यात समन्वय चांगला आहे, तुम्ही करून घ्या. पण मी नाही करू शकत ते काम. Then there might be a problem if you do it after the possession. Suppose कन्सेंटची गरज लागेल ना तुम्हाला वरती. That's what you're saying. हो लागेलच ना, तर ते लागणारच आम्ही आहे. आताच देतोय ना नाही तुम्हाला नाही, consent. तसं नाही चालणार. मी नाही करत ते सर. व्हेरी सॉरी, व्हेरी सॉरी. ओके, सॉरी. आय विल ट्राय बोथ लँग्वेजेस मॅम. इज इट ओके? कधी कधी भावना मराठीतनं, समटाइम्स इमोशन्स गेट एक्सप्रेस थ्रू मराठी वेल. आय विल ट्राय माय बेस्ट. Okay, Mohit 1905, even 1905. I have a confusion here. I have taken all the precautions. What you said कि flat में ऐसा mopping करना है, ठीक है. My flat is perfectly fine. But the thing is, the flat above me, maybe intentionally वो टैप छूट गया, सीपेज आ गया, ठीक है. मेरे फ्लैट में तो आ गया सीलिंग पे. मैंने कॉन्टेक्ट किया. Now that upper floor person is not listening. I contacted you, and you have put that issue in that third category नहीं है, workmanship का issue नहीं है. So now you tell me who is responsible here. तो उसमें क्या होता है कि when we are giving possession, we are getting a consent from all the owners to access your apartment in times of maintenance. तो वो हम consent, express consent लेने वाले हैं जब आप possession लेंगे तब. और as a responsible homeowner और as a responsible society, मेरे 16-17 सोसाइटीज में आज तक एक बार भी ऐसा हुआ नहीं है. इतने सारे हमारे कस्टमर्स हैं, कंसेंट एक लिया बार भी बट नहीं आ हुआ. गया. अभी मैं क्या करूं? तो उसको वो we नहीं will, सुन रहा है. no, सामने but वाला we is will not have, listening. नहीं ऐसा लिस्टिंग का Let's say सवाल he's नहीं an है. पुलिस कंप्लेन कर दो ना. वो इन्वेस्टर है, पुलिस रहता ही complaint नहीं है यहाँ, इंडिया में नहीं रहता. नहीं, क्या नहीं, करूं? अगर इंडिया में नहीं तो अच्छा ही है. तो हाँ, फिर तो- लीकेज कैसे आएगा? भाई अगर पानी नहीं गिरता है तो लीकेज कोई कैसे? टेनेंट छोड़ के चला गया, टैप खुला रह गया, विंडो खुला रह गया, आ गया लीकेज. हाँ, तो मेरे फिर- फ्लोर में तो दिख रहा है, हाँ. मेरे सीलिंग में दिख रहा है. तो we will have to cap that seepage and again Who is going to take care of that? That's what I'm सीपेज asking. सोसाइटी मेंटेनेंस किसके लिए है? अच्छा, वो उससे जाएगा, उस फंड से जो जाएगा. कॉमन जो है और उसको डेबिट पड़ेगा ना. अच्छा, वैसा होगा. यस, उसके फ्लैट I'll को डेबिट contact है. society, like No, maintenance person. our team is here. Chairman, secretary, MCB also will be there. There will be adequate pressure on that particular individual also. But even if it happens, society maintenance हो या VJ funds हो, that issue important ये है कि वो issue resolve हो. चाहे वो temporarily हम एक gap funding करेंगे कि चल ठीक है कितना खर्चा आ रहा है, चलो हम gap Are you funding going to करेंगे. take that consent? उस समय कि मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मान लो 1 लाख रुपया खर्च आ गया, बस मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा बोल दिया,
नहीं, और 10,000 ही आ गया। आप ऐसे फिगर लोगे तो लोग भी डर जाएंगे ना। एग्जैक्टली ऐसा ना बोले तो ना। आप उससे कंसेंट तब लोगे क्या कि मेरे फ्लैट में अब इतना सीपेज आ नहीं, गया है, कंसेंट तो पहले से ही है। कितना भी होगा यू हैव टू बेयर। हाँ, Like 100%। that Yes, it is there at the part when we are giving possession। जब possession undertaking जो हम लेते हैं ना, तब possession undertaking के टाइम पे ये सारी चीजें we will be getting them in writing from that particular owner। चाहे आपको नेबर हो, ऊपर का हो या नीचे का हो। अगर मान के चलो साइड वाले नेबर ने कल जो है वो आर पार ड्रिलिंग करना चालू किया, ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं ना फ्लैट में। ओनर हो तो कुछ भी करना है, ऐसा थोड़ी ना कर है। ही सकते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। बट एज ए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, फिर सोसाइटी किसके लिए बनी है? एमसी क्यों है? एमसी को पावर्स क्यों है? आज कोऑपरेटिव एक्ट जो है, कोऑपरेटिव एक्ट टुडे एम्पावर सोसाइटीज टू टेक दीज कोएर्सिव एक्शंस। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, बैंक को इन्फॉर्म करना आपके हाथ में है, सोसाइटी के हाथ में है, सारे पावर्स है टू इंश्योर दैट अ पर्टिकुलर मेंबर, इफ दैट मेंबर इज नॉट लिविंग बाय गुड होम यूजर रिस्पॉन्सिबल गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो नहीं करता है, तो उसको एम्पावरमेंट का अधिकार सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के पास 100% है और हमारे पास भी है। Let's see, because I'm just living just beside Bhumka Chowk and I'm one of the committee members, right? The हाँ। working committee member, हाँ। right? हमें मेंटेनेंस नहीं मिलता है, आप तो फाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 साल हो गए मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। फिर आपको फाइन लगता जा रहा है। मैं वही बढ़िया। बोल रहा हूँ, मैं वही कुछ बोल नहीं हो रहा रहा हूँ है। कि उसमें जो प्रोविजंस है वो आपके बिल्डर ने आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। जब हमारी सोसाइटी एमसी बनेगी तब वो एमसी का आई विल एक्सप्लेन व्हाट रूल्स यू हैव, व्हाट पावर्स यू हैव, हाउ व्हाट इज सेक्शन 151 ऑफ कोऑपरेटिव्स एक्ट, हाउ कैन यू एनफोर्स दैट। अगर मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटी टीम क्या कर सकती है। ये सारा फोरम आई एम टेलिंग यू नाउ, बट when MC happens, when we take the AGM, when we start the MC, all these things will come in place. Let's see. Thank you. Yes, Rohit ji. जब पहले एपॉक्सी का बात हुआ था, सीमेंट या किसी का भी, तो द रीजनिंग गिवन वाज कि एक तो ये मल्टी हाई राइज है इसलिए हम एपॉक्सी कर रहे हैं ताकि जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है उससे नहीं आए, और दूसरा कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती तो वो सिर्फ एक टाइल को निकाल के काम चल जाएगा। What he is saying is true। अगर ऊपर वाले को लगेगा कि अगर इपॉक्सी का मैटर है, टाइल्स निकल के मेरे को इपॉक्सी लगाना है, तो वो इतना परेशान नहीं होगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि सारी टाइल टूट के वापस से टाइल खर्चा लग के और इपॉक्सी लगेगा, और आई थिंक दैट इज द रीजन यू आर आल्सो सेइंग कि अब लग चुका है। अब वो मैंने भी देखा है जिसने ठीक किया है वो टाइल फोड़ के ठीक किया, उसने टाइल निकाल के ठीक नहीं कर पाया, तो मतलब अब कुछ भी हो रहा है तो टाइल फूटी जाएगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। Again, so why I am telling you is that see the concept of a spacer is because of thermal coefficient of expansion। कि अगर अपना जो स्ट्रक्चर है, because it is a high rise structure and because the climate change की वजह से one of the reasons है कि extremities we are seeing extremities, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो समर सीजन हो या चाहे वो विंटर सीजन हो, तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को टॉलरेंस देने के लिए हमने ये स्पेसर दिया है। Now this spacer में जो ग्राउट भरना है, again there are two types of grout, one is an epoxy grout and the other is a cement grout। तो हमने जो ड्राई एरियाज जो है, ड्राई एरियाज में हमने ये सीमेंट ग्राउट भरा है, और जो नॉन ड्राई एरियाज या वेट एरियाज जो है वहां पे हमने इपॉक्सी ग्राउट भरा है। तो इसमें समझा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू आर नाउ ट्राइंग टू से इज कि वो टाइल तो टूटेगा ही टूटेगा सारा। अगर नहीं, change किया कैसे टूटेगा? तो जितने फ्लैट ठीक हुए उनमें वो टाइल निकाला क्यों, उन्होंने फोड़ा क्यों सारा टाइल्स? कौन सा सारा? 201 में देखा मैंने। नहीं, एक हाथ दो रिप्लेसमेंट के लिए किया होगा, बट वो उसके लिए नहीं। जिसमें भी पानी भराया उन्होंने ऊपर का टाइल जाके फोड़ा सारा, उसके अंदर का पानी सुखाया है। तो ठीक है ना। सो क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर, मतलब वो ड्राई होने के लिए बेडिंग का पानी निकालने के लिए हमने एक हाथ दो टाइल शायद से निकाली होगी, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वंस दिस सीमेंट ग्राउट 5 साल के बाद हो या 4 साल के बाद हो, उसके बाद आपको अगर रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं। नाउ माय ऑल ग्राउटिंग इज डन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। सो I need to leave. I have booked exam unfortunately too. एक last thing, अगर you are covering एक carpet area का है, I'm raising from last 1 year है मेरे पास कि 3% by design हमको कम मिला है। नहीं 3% नहीं है, 0.13 0.2% तक के है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये शीट में आपको भेजता हूँ। महेश को मैंने मेल किया कि मुझे आप बता दीजिए कि जो 710 कारपेट एरिया है जो भी है उसका प्रूफ क्या। मैंने जो डिजाइन लिखा है, although I'm getting less than the design itself। So what I suggest is possession के टाइम पे जिन को फ्लैट गिन के चाहिए उनको हम गिन के भी देंगे,
जिन जिन को उसका मेजरमेंट का एरिया कैलकुलेशन चाहिए वो भी करेंगे। आज मेरे प्रेजेंटेशन में हमने एक कंपैरिजन भी किया है कि आपका डायमेंशंस के टाइम पे क्या था, अभी कितना है, आधे इंच का फर्क है। कहीं कहीं जगह पे वो टॉलरेंस जो है वो प्लास्टर और स्ट्रक्चरल थिकनेस का आता है, और मैक्सिमम परसेंटाइल पे देखो तो वो 0.5% के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3% जो है वो 3% से ही कम हमने डिजाइन किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रेस किया, तो सीआरएम की तरफ से वो क्लॉज लिख के आ जाता है बार बार कि 3% का तो आपको बोलने का हक ही नहीं है। नहीं ऐसा मैंने उनको बोला कि 3% भूल चूक लेनी देनी है, प्लस नहीं। माइनस। मैंने कहा आप एक प्रूफ दे दो कि किसी को प्लस गया हो, नहीं, सबको ऐसा माइनस नहीं। गया है। नहीं, दूसरा- डायमेंशंस में कभी कभी क्या होता है, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चरल जो थिकनेसेस रहते हैं ना, कॉलम्स के हो या शेयर वॉल वो के समझता हो, हूँ मैं थोड़ा तो बहुत। उसी में वो 0.5% तक प्लस माइनस हुआ है ज्यादा। डेढ़- हम डायमेंशन चेक जब आएंगे तभी सर प्रश्न मैं लास्ट बोल रहा हूँ, 1.5 इंच मैंने नापा है, 1.5 इंच कम है। हाँ नहीं 1.5 इंच नहीं है, आधा पौना इंच होगा कहीं कहीं भी जगह पे, कहीं जगह पे 1 होगा, कहीं जगह पे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होते रहता है। लेकिन ओवरऑल इफ यू सी द कारपेट एरिया that is 0.5% here or there. I have the drawing also with me. I have got it today. अगर आपको चाहिए, so whoever at the time of possession we have a laser meter also, digital meter भी है, तो उससे भी आप गिन सकते हैं, उससे से भी आप माप सकते हैं। एक लास्ट चीज, जो प्लस माइनस 0.3% का क्लॉज है, इज इट जो जैसे आपको 710 का पे किया है मैंने, वो बाय डिजाइन ही अगर कम हो कि बनने के बाद वो कम हो गया गलती नहीं से? सी कैसा होता नहीं, गलती नहीं होता है। कैसा होता है कि जनरली व्हेन वी आर सबमिटिंग एनी प्लान्स फॉर अप्रूवल या सेल्स टाइम के टाइम पे, वी आर अज्यूमिंग सर्टेन थिकनेसेस ऑफ शेयर वॉल। अभी ये जो अपने दीवार है या ये सारे जो शेयर वॉल्स है, जो अपने कॉलम या कॉलम्स जो है, उसकी हम थिकनेस कुछ कुछ अज्यूम करते हैं। मान के चलो कि मैंने 150 mm का वॉल मैंने अज्यूम किया है, उसके हिसाब से मेरा सेल्स प्लान हुआ है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है और डिजाइन के बाद अगर स्ट्रक्चरल लोडिंग ईटैप्स के मॉडलिंग की वजह से अगर वो मुझे 150 का 160 करना पड़ा फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रीजंस, तो ये टॉलरेंस उसके लिए रखा जाता है। और जो भी हम डायमेंशंस देते हैं ब्रोशर में, वो सारे अनफिनिश्ड होते हैं। अनफिनिश्ड मतलब क्या, कि जो जिप्सम का जो लेयर आता है, जिप्सम प्लास्टर का जो लेयर आता है, वो छोड़ के हम डायमेंशंस देते हैं जनरली, तो वो टॉलरेंस होती है। और अगर 12 mm ये साइड से हो और 12 mm अगर वो साइड से हो, तो दोनों मिला के तकरीबन 1 इंच का ओवरऑल फर्क, कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कभी 1 इंच होता है, कभी आधा इंच होता है, तो ये उसका फर्क होता है। ठीक है, जिप्सम का तो मैं समझा था, पर मैंने जब रॉ फ्लेट नापा था तब भी है। सेकंड थिंग जो आपने but why the owner will get the wrath of design के टाइम पे 150 था, हमने थोड़े दिन बाद सोचा 160 होना चाहिए, तो वो So, तो struct- 710 का पे किए करके 21-20 फीट उसको कम मिल रहा है। He is ऐसा losing 2 लाख रुपए। 21 फीट कम नहीं है, 3% कहीं पर भी कम नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपको, 0.5% का वेरिएशन है, मैक्सिमम 1% तक जाएगा। लेकिन जो हमने कैलकुलेशन जो की है उसके हिसाब से मैक्सिमम 0.5 ही है। 3% का उतना वेरिएशन कभी आता नहीं है। ये तो जब ओरिजिनल सेल्स, क्योंकि मैंने बहुत शुरू में फ्लैट लिया था, यहाँ पर ग्रीनरी प्लांट, बाद में मुझे पता चला कि ड्यू टू लैक ऑफ, किसी को 2 स्पेस चाहिए था, 3 स्पेस चाहिए था, तो पूरा फ्लैट मतलब पूरा सोसाइटी में पैर रखने का जगह बचा नहीं है। टोटल 340 फ्लैट में 7 विजिटर पार्किंग है। आई थिंक विजय ने सोचा होगा कि हाँ इतने ही विजिटर, 7 ही लोग कार लेके आ सकते हैं। 7 विजिटर पार्किंग है
एक एक इंच बिका हुआ है इन टर्म्स ऑफ कार पार्क। तो एक एक इंच बिका हुआ है मतलब नहीं, बाकी जो नहीं कैसा है, मैं आपको ये बोल के रहा हूँ कि जो विजिटर पार्किंग है वो है, और जो ब्रोशर में था उसके हिसाब से ही हमने सब लैंडस्केपिंग किया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नहीं है ना, सो ये घूमने तो दो, थोड़ा सा सामने आने तो दो। सो दिस एंटायर लुक विल चेंज। यहाँ पर भी हमने जो भी लैंडस्केपिंग किया है दैट इज एज पर ब्रोशर ओनली, वहां पे कुछ भी हमने अलग से कुछ भी नहीं किया है। आई थिंक एक सेकेंड, मैम वांट्स टू टॉक। यस मैम, वो बहुत टाइम से हाथ। सर एक्चुअली मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, जैसे इपॉक्सी ग्राउटिंग अगर हम अभी कराएंगे तो ऐसा कुछ होता है टाइल्स, मतलब मुझे इन्होंने पूछा क्वेश्चन पर मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ कि उसको उसकी वजह से टाइल्स निकालनी पड़ेगी या फोड़नी पड़ेगी और फिर होता है, या साइड से कराना है, क्या है सिस्टम पूरा? मेरा उसमें अनुभव बहुत कम है कि लगाने के बाद अगर कोई इपॉक्सी करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका अनुभव मुझे नहीं है, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू डू इट। मेरा उसमें जीरो अनुभव है। तो एक बार चाहिए तो आपके फ्लैट में एक मॉकअप करके देखते हैं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, बट एक करके ले लो आप, लेकिन पोजीशन के बाद, पोजीशन के पहले नहीं। और सर एक मतलब मेरी बात हुई थी इंटीरियर डेकोरेटर से, तो उन्होंने बोला एक डॉक्टर फिक्सिट का भी कुछ है, मतलब वो भी लगा सकते हो आप। मैम वही तो हमने लगाया है, फिक्सिट का ही, सारा वाटर प्रूफिंग फिक्सिट का है। अच्छा, ड्राई एरिया में फिक्सिट का? नहीं, जो ग्राउटिंग है वो वही हाँ, तो। वो ग्राउटिंग डॉक्टर फिक्सिट डॉक्टर का? फिक्सिट का नहीं है, आरडीएक्स एंडोरा करके रॉफ केमिकल है ना, कैराकॉल का है, कैराकॉल करके कंपनी है, उनका है ग्राउट। अच्छा, सो जो हाँ, कैराकॉल इज एन इटालियन कंपनी, अच्छी कंपनी है, दे मेक दीज स्पेसिफिक सीमेंट ग्राउट्स, सो वो कंपनी का हमने यहाँ पे ग्राउट लगाया है। अच्छा, और सर वीजे फोरेंशिया और ये वीजे एंकोर की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, मतलब वो समझना था। मैम क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी है बहुत बड़ा एक शब्द है, किस चीज के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसमें इतने सारे मटेरियल जाते हैं, इतने सारे एजेंसीज काम करते हैं, तो किस चीज के क्वालिटी के बारे में आप पूछ रही है वो थोड़ा सा है, लेकिन एज अ जेनेरिक आंसर टू योर जेनेरिक क्वेश्चन, क्वालिटी इज गुड। प्लीज, योर एंजाइटीज आर अंडरस्टूड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एंशियस होना नहीं है, लेकिन द बिल्ड क्वालिटी ऑफ आवर होम्स विल बी गुड। Apart from a few isolated incidences here and there, no need to worry about anything. अगर incidents आता भी है, तभी we are here to give you service. We will not run away. As I was mentioning, I was called by one of our past societies, और वो societies handover के पहले similar type of interaction हुआ था हमारा, लेकिन अभी it is absolutely fine. Once you start coming in connect with our FM team, you will also be very happy. Be rest assured, कुछ होता है तो we are here. We are not here to create a dispute कि अरे नहीं ये जो है ना वो उसकी गलती की वजह से हुआ, उसको करना नहीं है। नहीं, ऐसा हम कभी करते नहीं है। हमको आप पे अगर विश्वास है, वो बात है नहीं, हमको बस ये है कि जो बाद में तकलीफ होने वाली है, उसको पहले ही समाधान कर लो, तो बोलते हैं ना stitching time saves nine. इसीलिए तो हमने we all belong to that thought process. A stitching time saves nine. मैम ये जो चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, this are all photographs of Yashwin. These are all stitches that are taken in time at that particular time. तो ये सारे जो क्वालिटी प्रोटोकॉल्स है, आज मैं क्यों ये सारे फाइलें लेके आया हूँ, all these are containing all our test reports over the last 3 years that we've done, and this is not because of today's meeting. This is something that we are doing passionately in-house for a long period of time. The only issue is that when the testing and commissioning was happening, there were some members who came, they were afraid, oh my God, what is happening? And they have kind of, it has created panic. But don't worry, these are all expected things to come, and these are expected things to resolve also. Oh. Thank you. Thank you. Shall we go ahead or? बैठना है तो बैठ लीजिए। अभी एक ही पॉइंट हुआ है, अभी और 18 जाने हैं। वेरी नाइस। No, that's okay. हमको we are used to standing. Don't worry. पर क्या कुर्सियाँ क्या? जी। माइक क्या? अच्छा उनको बोलो। मैंने एक रिक्वेस्ट रेज की थी,
जो मेरे फ्लैट के ऊपर की जो ओनर है उनका कांटेक्ट नंबर के लिए कांटेक्ट नंबर और ईमेल मैम सर सीपेज लीकेज पे हो तो क्वेश्चन पूछिए ना, बिकॉज काफी सारी चीजें हैं. ओके बट फाइन, बट ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ओके आई एम फॉलोइंग अप सिंस 1 वीक. हाँ, आपकी पूरी टीम भी है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए ऊपर वाले का? यस नहीं, दिस इज वेरी सिली थिंग, बट नो, सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, बट हर टीम से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. सी इट्स अ मैटर ऑफ डेटा प्राइवेसी. मैं डेटा शेयर मैं थोड़ा सा डेटा नहीं दे सकता हूँ, राइट. क्योंकि कैसा होता है कि आपने मेरा नंबर किसको पूछ के दिया, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला इशू होता है. बट आई थिंक यू गाइज आर सो वेल कनेक्टेड. एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक डाल देते हैं और यू नो सच गुड, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवन. ओके, तो कोई ऐसा problem तो ओके, तो ऐसा कर सकते हैं राइट. तो मेरा तो नंबर शेयर कर सकते हैं उनके साथ. जी, मेरा नंबर तो शेयर कर सकते हैं उनके साथ. उन्होंने पूछना चाहिए. वो अगर वो मेरे को नहीं तो बोलेंगे इनका नंबर मुझे क्यों भेजा, मैं क्या करूंगा इनका नंबर लेके, वो मुझे उल्टा डांट देंगे. नहीं देखिए मुझे कुछ क्वेश्चन था, कुछ काम था उनसे. जस्ट एन एग्जांपल आई एम सेइंग, ओके, बिकॉज़ ऑफ दिस ये लीकेज का वगैरह जो चल रहा था, क्योंकि मैं पीओपी कर रहा हूँ, उनके यहाँ पे कुछ लीकेज का है क्या, मैं टाइल्स भी चेंज कर रहा हूँ. मेरे बहुत से क्वेश्चंस थे. तो मेरे जो निचले फ्लोर जो रहते हैं तो उनसे तो मेरी बात हो गई. जो अपर फ्लोर पे उनसे मुझे बात करनी है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आए. हम क्या करेंगे सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट व्हाट वी विल डू इज एट द टाइम ऑफ सोसाइटी फॉर्मेशन, वी आर जस्ट अ फ्यू मंथ्स अवे. सोसाइटी फॉर्मेशन के टाइम पे ना मुझे बकायदा सारे इंडेक्स टूल्स जो है वो सोसाइटी को फॉर्मली देने पड़ते हैं, करेक्ट. तो हम कमिटी फॉर्म करेंगे, मैं कमिटी को सारा डेटा दे देता हूँ और कमिटी से ले लीजिए. मेरा थोड़ा सा ये मामले में प्रायर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा डरता हूँ नंबर डायरेक्टली शेयर करने से. हम भी नहीं देते क्योंकि वो बड़ा बाद में वो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आई डोंट वांट टू you know cause any form of inconvenience to you, but this is something that we follow at our end. Okay, fine. Thank you sir, thank you. And This is Abhishek, A11201. hi Abhishek. दो क्वेश्चन थे. एक तो ये कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे लॉबी में जो अपना फायर फाइटिंग वाला पाइप्स है वो जहाँ पे फिक्स किया है क्लैम्प, वहाँ से बहुत ज़्यादा सीपेज देखा है 1-2 जगह पे. और दूसरा जो हमारी कॉरिडोर है, मतलब 4 फ्लैट्स इस साइड है, 4 फ्लैट्स दूसरी साइड है, बीच में जो कॉरिडोर है दोनों साइड से ओपन है, तो बारिश का पानी आसानी से अंदर आता है. एंड वहाँ से पास होने के लिए 2 छोटे होल्स हैं, और वो भी मतलब वहाँ पे कोई पाइप नहीं है, वो होल से बाहर आएगा फिर दीवार पे पैसेज में. हाँ, पैसेज में पाइप का काम चल रहा है उधर, पाइप डालने वाले हैं. पाइप डालेंगे तो देन इट इज ओके, अदरवाइज क्या होगा कि वो फिर से दीवार पे आएगा. करना लिया है. थैंक यू. Thank you. Generally, developers don't put that pipe, लेकिन हम करते हैं. मैंने देखा नहीं इसलिए. और वो जो आया है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जो सीपेज देखा है अच्छा, उसका क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि ऊपर से कोई पानी गिरा नहीं हो सकता है कि मान के चलो बारिश के टाइम पे ही कुछ, बिकॉज ऊपर का जो डक कवरिंग है, कवरिंग का काम चल रहा है ना अभी. सो ये बिल्डिंग का खत्म हो गया है, दूसरे बिल्डिंग का चल रहा है. तो ये बिल्डिंग का खत्म होने के टाइम पे मान के चलो कहीं से कुछ अगर आया होगा, लेकिन आई एम श्योर ऑल दीज इश्यूज विल गेट रिजॉल्व्ड, दिस विल ड्राई ऑफ आल्सो. ग्राउटिंग रिलेटेड नंतर घ्यायचं की आता एक विचारा. आता सगळ्या चर्चा चालूच आहेत तर आता कोणता मुद्दा राहिलाच नाहीये, तसाही पण बोला. सर, जेव्हा फ्लॅट परचेस केला होता त्या टाइमला ग्राउटिंग व्हाईट कलरची होती, बरोबर. आणि आता जेव्हा फ्लॅट बघतोय आम्ही तो तेव्हा आहे मुद्दा. हा, तो नंतर चालेल. आहे तो मुद्दा आहे. आगे जाए. चलिए, so we move on to internal plumbing. So this is typically a flat, the internal plumbing, how it is done. All the pipes are CPVC pipes, Astral company से बनाए हुए सारे pipes है, and all these pipes are pressure tested before we do the tile pasting to make sure that all the joints, everything is absolutely leak proof, waterproof, or there is no form of any leakage through any of the joints. We have records of all these testing that is done. This pressure test is done at almost 2 times the pipe pressure, so that
मतलब डिजाइन प्रेशर से 2 times हम प्रेशर देते हैं एंड इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 24 आवर्स ये प्रेशर हम डाल के रखते हैं ताकि आफ्टर 24 आवर्स वी चेक ऑन द गेज कि बाबा प्रेशर अभी कम हुआ है तो लीकेज है, अगर प्रेशर उतना ही मेंटेन है तो कोई इशू नहीं, एंड फिर उसके बाद हम चालू करते हैं जो टाइलिंग का काम हम चालू करते हैं. सो दिस इज प्रेशर टेस्टिंग. माय ओनली सजेशन इज दैट when you will be coming inside the apartment, जब use करना चालू करोगे तब we will be sharing this layout with everyone so that say for example tomorrow you are going to fix some accessories हो या towel rod हो या कुछ अगर काम आपको टॉयलेट के अंदर करना है तो हम ये मार्किंग आपको एक ड्राइंग पे देंगे, तो वो मार्किंग छोड़ के आपको ड्रिल लगाना है. नहीं तो मेरा थोड़ा सा अगेन अनुभव ऐसा है कि जब आप ड्रिलिंग आपका कारपेंटर अगर बिल्कुल पाइप पे करता है तो वो पाइप अगर एक बार ड्रिलिंग की वजह से फूट जाती है तो फिर से पानी जो है वो नीचे आके लीकेज और सीपेज का प्रॉब्लम बन सकता है. तो वो थोड़ा सा सावधानी लेनी है ताकि फिर इवन एट द टाइम. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन आवर अंडरटेकिंग एंड पोजीशन रिसीट आल्सो. और मान के चलो इफ देयर इज एनी अगेन आइसोलेटेड इंसिडेंट्स अगर होता भी है तो हम है यहाँ पे सर्विस देने के लिए, कोई इशू नहीं आएगा. हम नॉर्मली क्या करते हैं कि थोड़े जो टाइल्स है वॉल टाइल्स के और फ्लोर टाइल्स के वो हम थोड़े स्टॉक में रख देते हैं हमारे पास ताकि फिर वही डिजाइन का अगर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वी हैव सम स्टॉक विद अस सो दैट इफ एनी फॉर्म ऑफ सच इशू इज कमिंग देन वी आर एबल टू क्विकली फिक्स इट. ओके, सो ये सारा रजिस्टर हमने मेंटेन किया हुआ है प्रेशर टेस्टिंग का. इसको पाइप डालने के बाद वी यूज अ नॉन श्रिंक ग्राउट ताकि वो जो भी उसका चेजिंग पॉइंट्स है वो सारे उसको सील कर सकते हैं. और उसके बाद हम टाइलिंग के बाद हम सीपी फिटिंग्स लगा देते हैं. सो एक्सटर्नल वाटर सप्लाई में जी यस नहीं पेंटिंग नहीं, हम एक ड्राइंग देंगे जी. ठीक आहे, वी विल इश्यू दॅट, पॉइंट टेकन. सो हा एक पॉइंट नोट करा की सॉफ्ट पोझिशनच्याच वेळेला आपण एक त्यांना जो आपला प्लंबिंग लेआउट्स आहेत त्या प्लंबिंग लेआउटची एक चांगली अशी एक आपण A3 ला एक खाली पण एक ठेवू, FM ऑफिस मध्ये पण ठेवू आणि लेआउटची एक A3 साईजला ना सगळ्यांना आपण एनिवे सर्क्युलेट करतो पण सॉफ्ट पोझिशनच्या वेळेला. पॉइंट इलेक्ट्रिकल ऑल्सो येस, पॉइंट टेकन. So electrical and plumbing layouts to be shared at the time of soft possession. Yes. Shall I go ahead? So downtake from overhead tanks. Again, all these pipes are high pressure pipes. Schedule 80 pipes. Pressure lines are there. We have also done a terrace looping so that because generally what happens is that the top 3 floors, because they are on the topmost floor, उनका pressure थोड़ा कम रहता है because उतना पानी का head नहीं मिल पाता है. तो हमने टॉप 3 फ्लोर्स के लिए अलग से उसका बूस्टर लाइन हमने किया है फॉर द टॉप 3 फ्लोर्स टू मेंटेन एडिक्वेट प्रेशर. एंड बाकी फिर 3 फ्लोर्स के बाद नीचे जो है उनका लाइन अलग है और उनको नेचुरली ग्रेविटी का प्रेशर आ जाता है. और हर एक प्लम्बिंग लाइन को हमने बाहर प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व एक दिया है कि जिसका एक सेटिंग होता है ताकि कभी कभी व्हेन यू आर फ्लशिंग और कभी कभी इवन इन द शावर यू माइट फाइंड कि अरे बहुत जोर से पानी आ रहा है, बहुत तेज से पानी आता है. तो वो अगर ऐसी अगर सिचुएशन आती है सो इन्फॉर्म आवर एफएम टीम, आवर प्लम्बर विल गो एंड ही विल जस्ट चेंज द सेटिंग ऑफ द प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व. सो ऑल PRVs आर गिवन फॉर ऑल द डाउनटेक लाइन्स टू एंश्योर दैट द प्रेशर ऑफ द वाटर पाइप इज मेंटेन्ड एट द एडिक्वेट लेवल. सो दीज आर ऑल द वॉल्व्स एज आई वाज मेंशनिंग, बटरफ्लाई वॉल्व्स है सारे. इसमें वो जो एक प्रेशर गेज दिख रहा है वो प्रेशर गेज भी है एंड दैट स्ट्रेनर is actually a cleaning mechanism. अगर जो पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन में अगर कुछ कचरा या कूड़ा अड़कता है तो उसके लिए it's easier for the plumber to do a repair work. So that is typically is installed at the top terrace level so that all the kachra and everything from the pipe gets cleaned off. Again, these are the booster pumps that we have installed, the ball valves that are there to isolate any problematic connection अगर आता है तो उसको isolate करने के लिए हम ball valves भी देते हैं. NRVs are given non-return valves. So typically what happens is that for solar line and even for pressure lines, generally the water flows in odd directions. तो उसको कैप करने के लिए unwanted hot water, cold water की लाइन में ना जाए, इसके लिए हमने NRVs non-return valves भी
DOA, and as I was mentioning, the pressure reducing valve is also given. So this is the plumbing platform that we have given. It's a ledge. Agar koi maintenance ke time pe, if there is any maintenance requirement, these platforms are given. In fact, as you can see, the Z brackets on which the pipelines are fixed, those are also GI Z brackets, so that those are also very sturdy. They are fixed with bullet fasteners, so that even in case of high pressures, the pipes don't wobble and they don't shake. Okay, external painting. This is, I think, an important point from seepage point of view. I'd like to spend some time on that. We've used Asian paints. The paint is called Apex Ultima Protex. It is the top-notch paint of Asian company, one of their best paints that they have. This is their data sheet that you can look it up also. They come with a 10-year warranty for color, for non-fungus also. It doesn't have any moss or anything growing on it. And the third and important point is that it is a waterproof paint, and also it is a heat reflective paint. So it's a very high performance paint from Asian company, and we've used this paint for all the external areas. Now the procedure for painting, this is a totally a 5-coat system, wherein so the first coat for the first stage is the whole packing. Now what happens is that many times we find seepages on the wall surfaces. Apne yahan pe abhi tak ke we have not seen on the mid wall. You must have seen it on the lower floor that I mentioned is because of the seepage and the capillary action that happens. But mid wall and on the top, generally it happens because these holes in the walls, they are generally left as a wall ties. When we are doing aluminum formwork construction, we generally have wall ties to separate those two or to maintain the gap. These wall tie holes are filled with a mortar which is called as GP2, and GP2 is a Fosroc company mortar. This is a non-shrink mortar and non-self-curing mortar, and this grout doesn't shrink after it dries. Typically cement has some shrinking properties, so this grout doesn't shrink. This is a non-shrink grout. So we have packed all the holes on the external surfaces with this GP2 mortar. And thereafter we start the surface preparation. So any slurry or anything is cleaned off using a concrete grinder. The entire surface is fully cleaned. We use a concrete cup grinder to do all the surface preparation. Then all the groove making is also done. Then joint filling is done. Wherever that there are minor joints, we fill it up with acrylic paste, which is a waterproof paste. Then primer application is done. So this primer basically works like an adhesion between the main paint and the concrete surface. So this primer is the first coat that goes. 2 coats of primer, and then we do a texture application. So this texture is also done with sand particles, quartz, high strength quartz particles. So the texture is done on the top of it. You can see the texture paint on our entire surface. And then we do 2 coats of this Apex Ultima Protex. And this coat doesn't have any form of, so it comes with a company warranty of 10 years. Nothing happens to this paint for a period of 10 years. So any questions on the paint aspect, or should we go ahead? Okay. So some of the practices, again, as I was mentioning that generally not many contractors or developers would use GP2 because GP2 is an expensive product. But this is an area where we don't want to compromise, as I mentioned earlier. So we are using Fosroc GP2 non-shrink grout to pack all the holes that are there between the wall surfaces, external walls. So the chances of the probability of any water seepage coming directly from the wall surfaces are nil. This is the bonded chemical that we used for gypsum. Typically, on the interior surface, we have an RCC wall, and on that wall, we put gypsum plaster on it. Now, this gypsum plaster, the wall surfaces are generally smooth, right? So to have good control and to have good adhesion on the wall surface, we have used Saint-Gobain bonded. It's a chemical that comes. It's a brush and a roller applied chemical. It has small rough particles of sand in it, so that it creates a rough surface. It's a green color paint.
So it creates this rough surface on which the gypsum can attach, and the gypsum doesn't debond after a period of time. So this chemical we have used, and we have also carried out this pull-out test to check the bond. So all these photographs are from Yashwin that were taken at the time gypsum plaster was being done. So some of the water testing. So this is also the wherever that we have done cement plaster, we have carried out similar pull-out test by using a machine. So it has a jockey. It cuts a small core, and then it tests the bond strength between the main mother surface and the material that we are going to put plaster on. So surface preparation, curing of plaster was done properly. For the overhead tank, for the overhead tank, we have used Chemprol system to plug all the joints, because this tank is typically expected to be full of water, and we don't want the water to be coming out of the tank area, right? Because it's going to permanently remain with water. So this is also a very high performance material by Chemprol company. They specialize in this type of waterproofing for the overhead tank. So Chemprol system was used here. Again, the mesh was used for top terrace, typically for top terraces to cater to the heat variation and to avoid any cracking that may happen in the top terrace. Seepage, as someone was mentioning about seepage. So wherever that we have brick walls, we use this damp-proof coating. So it's a DPC, it's called as a DPC. So wherein this chemical basically prevents the water to go into the mother surface or the RCC wall or the brick wall. So only the minor seepage that you see, which is in the bottommost 8 inches or 10 inches, is because of the gypsum that is raising water in the capillary action. But this will also dry off once the water goes out. At the time of construction, we had put all these bubble sheets on the floor as a protection mechanism. These are all our down takes. The photos were taken at the time of construction to ensure that the proper line of the down takes are mentioned. Because what happens is, agar line टेढ़ी माड़ी है, so the water pressure is so high that it might burst out the line. So, which is why the correct alignment needs to be mentioned. Just one second. Then for areas that have block work, we have done a hacking on the surface. So hacking is basically a tool to roughen out the surface, so that any gypsum or any plaster that goes on the surface, basically it has that much roughness for it to maintain that bond. The compound wall is also, as we see, it's all done in RCC. Traditionally or conventionally, the practice is to do a compound wall in block work. But considering the durability of the project, we have gone ahead with RCC compound wall. Again, as I was mentioning, the barrier between the wet areas and the dry areas, we have had a water barrier, which basically prevents the water from entering from the wet area into the dry area at the bedding level, at the tile bedding level. Waterproofing, podium waterproofing. I think there was some question on podium waterproofing. So, sir, we have done a PU grouting, PU coating, polyurethane coating is done. So this is the type of waterproofing that we have done. It's high performance, very good quality PU coating. This has an elongation of over 200%. And this is also by Dr. Fixit. So it's a good quality waterproofing that we have done. We have also added admixture for basement concrete. It's an integral waterproofing admixture. So even in peak rains, our basement, there was no water or anything that we experienced this time also. So this is a Dr. Fixit Poly Plus CP admixture that we've used for basement area concrete. As you can see in the adjoining areas, we've done some stamped concrete to improve the aesthetics. We are only waiting for dry season, because there'll be a very nice coating on top of this stamped concrete. It will be gray in color. It will bring out the aesthetics, but this needs to be done during the dry season only. So again, wet areas are all done in epoxy.
If you remember, we had one session in Wakat Central, right? It was I think, our first open house, and at that time there was a question regarding the accessibility of podiums to buildings. So we have created additional access from the podium parking directly. We will also be fitting access control devices from these areas so that access is also controlled and only authorized access can be given to members and to their guests. Lift capacities have been increased from 8 to 10 passengers and from 13 to 15 passengers, and we have also increased the lift speed. Earlier it was planned to be 1 meter per second, so now it is 1.75 meters per second. So high capacity, high velocity, these two lifts we have used. Kone is the company with whom we have gone ahead with. These are also very good lifts. An additional feature that we've given is a rubber dampener for the door frames. I think this is an important thing. It increases the the cushioning effect of the door banging. And it also like kind of push pulls the doors. So this is an additional thing that we've done. It was not in the sample flat, but we've done it because we thought we did a mock-up. The performance was good, so we thought of extending this. Not everything we do it considering budget, but these things I felt that these are important things that to be done to improve the overall ability. So open parking foundation was also a part of our commitment when we did one of the open houses, wherein there was a request that at least if you can help us with the foundation works, because normally in societies after the possession is done, there is again some digging that is done on the periphery to create those open sheds. So you don't have to do any form of digging, and you can, in fact, we can help you with the vendor also, and you can have the shed installed directly on the foundation bolts. So based on the parking markings, we've left all those foundation bolts. You can see it right next to the cars. So all the open parkings have these foundation bolts ready. Magnetic stopper for dry terrace. This is also given. High capacity pumps for dewatering in basement, because considering the sheer, the rainfall intensity, there was a lot of fear. We also had discussed this particular point in our open houses, wherein the need for, high capacity pumps we have seen. So 1,000 liters per minute is what the pumping capacity that we have now. And this is, enough to drain out any residual water that may come. But so far in this high intensity rainfall season, we have not seen any major or any water logging in the basement. Rainwater harvesting also we have done, so that there are recharge bores that we have put at various locations for the storm water and the rainwater to percolate down and for the groundwater to recharge. There was also our commitment during one of the open houses to give 2 additional bores. So we have given those 2 additional bores. There is a lot of water to these bores, but we've also fitted pumps. These pumps and these lines, so the work is going on. We have already connected these pumps to our water tank. So it's a very easy way of now, for the operation side, this is going to be very easy to operate also. So additional bores for water is also given. Yeah. है ना, बहुत है जी. Both the bores are functional. Secondly, what we have done is that we have something called as a subsoil drainage system. So under subsoil, what happens is that the entire basement, we have a line that is going around the periphery of the basement. So that's an additional line. So any water that percolates through the soil, that will first get out. We will start the borewell after the rain stops. So during rainy season also, we don't need to use borewell. So during rainy season, there is enough water in our subsoil itself to fill up our tanks. So 3 महीना तो वैसे ही बारिश के time पे no need of borewell, no need of municipal also. Even if it comes, it doesn't come. Our subsoil drainage system is sufficient enough. After monsoon, we can start our bore also. Thereby 3-4 महीने तो उसमें भी कोई issue नहीं. In fact, even we have also tied up with one of the adjacent Shetkari. We have taken his borewell also, because groundwater acts very funny sometimes.
सो हाँ, यहाँ पे रिचार्ज करेंगे तो वहां पे पानी आ सकता है, तो उसका नीचे का अंदर का कैसा उसका मैकेनिज्म है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाजू वाले के साथ अपन ने एक डील करके रखा है एट अ वेरी नॉमिनल मंथली रेंट ही इज विलिंग टू सप्लाई अस हिज बोर वाटर आल्सो एज ए कंटिंजेंसी प्लान. As a country, we have our 2 wells. There is sufficient water. Almost 1 lakh liter per day is the yield of the bore as of now. As of now, and for 1 bore. So for 2 bores, it's almost 2.5 odd lakhs liters per day. That is also sufficient. So water is there. There is no question or any issue on water. I'm coming ahead. So we fitted a RO system also, centralized RO. It is for drinking water, so it's fitted down. We are currently under the commissioning stages, and it's already fitted. So the duct covering. So these are all photos of Yashwin Encore. So all these photos are of here. All the RO, all the water filtration, all the photos that I'm sharing are already installed here. These are not something from some other site that we are showing. So duct covering also we've started. This is the duct covering that you can see for A2 building. A1 building is currently under process. This is also a unique feature. It's called lift well or other staircase pressurization. So in the event of any any fire or any smoke that may come as a part of our easy evacuation, this system gets turned on automatically, and it basically pressurizes the entire staircase so that smoke doesn't come inside the staircase. And it's very easy to evacuate people from that staircase. So this staircase pressurization is also being installed. Additionally, we have given motion sensors for all the passage lights at all the floors so that our electricity consumption gets reduced. So every alternate light is being fixed with a motion sensor so that it's easier, and also it's very efficient because your light bill will get reduced. Letter boxes have been fixed. This is also something new that we are doing here is some of the tanks are in the driveway or below the parking area. So the chamber covers we have used is a water seal type chamber covers. So it does not allow any dirt or any oil or any dust to go into the water tank. So once we have cleaned the tank, the tanks remain fully dirt free or pollution free, and you may not require frequent cleaning of water tank. So your quality of water also gets maintained. These are very special type of rubber seal chamber covers that we get. Electrical meter room is also done. All the MACB meters we have received from MACB. All the meters have also been fixed, and the meters are fully functional, and they're working fine. These are all the pump rooms, the fire pumps that we have installed. Yeah, now coming to this important question of bottle trap. So, so far any question? So far any question? Anyone? Yeah. Mic dena zara. Akshay? Akshay or anyone? Stand here, please. Yeah, it's on. Yeah. इनिशियली जो सर्विस लिफ्ट था अपना वो बेसमेंट तक था, ब्राउचर में बेसमेंट में था, लेकिन सर्विस लिफ्ट कौन सा सर्विस लिफ्ट? 15 पैसेंजर वाला? यस. अच्छा, हाँ. लेकिन अभी बेसमेंट तक जनरली आता है फायर लिफ्ट जो है ना, फायर लिफ्ट बेसमेंट तक नहीं जाता है. The reason is that in times of evacuation or in the times of any fire emergencies, one, you are not supposed to use a lift, but the rule says that one lift should not go all the way down. So it has to be at the ground level, because मान के चलो अगर कोई यूज भी करता है फायर और अगर नीचे का बंदा आता है तो वो नीचे डायरेक्टली बेसमेंट में जाएगा अगर बेसमेंट है तो इट्स अ रूल. फायर के टाइम तो लिफ्ट काम करना बंद ही कर देगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है. कभी कभी यूज भी कर देते लोग, ऐसा तो मतलब यूज करना तो नहीं है, लेकिन इट डज हैपन समटाइम्स that fire lift के लिए we don't allow it to all the way to the down. तो ये पहले भी होना चाहिए ना, इनिशियल लेवल पे पता होना चाहिए था ना. नहीं, बेसमेंट में कहाँ हमने ड्राइंग में दिखाया है. जब पार्किंग क्लियर किया था तो उस टाइम पर था कि बेसमेंट में यहाँ पर लिफ्ट. अच्छा, नहीं वहाँ पे तो मेरे हिसाब से we'll check this point. Even I am not really aware of this particular issue. उसको हम चेक करें. Yeah. I have one question.
So like a lot of time what happens is you have these parking, right? And if you look at the podium parking, so पानी बरसात वगैरह होते रहती है, नॉर्मल पानी वगैरह भी आता है, तो होता क्या है कि मतलब सीलिंग से हार्ड वाटर सैलेगमाइट्स बनते हैं या हार्ड वाटर लगता है, और फिर आपको गाड़ियों को लगता है, कांचों को लगता है, और आपकी गाड़ियां फिर खराब होती हैं उस हार्ड वाटर की वजह से, राइट? सो आपने जो मेजर्स लिए, राइट, यहाँ पर जो भी आपने बताया, विल दैट ट्राई टू नेगेट इट? आई एम नॉट श्योर उस पे, मतलब आई So हमने, जैसे मैंने कहा, पोडियम का जितना एरिया है उसको हमने PU वाटरप्रूफिंग किया है. So the chances of waterproofing are chances of leakage or seepage are less. But even if there is an isolated instance of any water that we see, generally क्या होता है कि if there is negligence on behalf of a maintenance team, correct? तो अगर negligence हो तो वो stalactite और stalagmite फॉर्म होते हैं. लेकिन अगर सीपेज के टाइम पे अगर हमको समझा कि अरे भाई यहाँ पे सीपेज आ रहा है, तो तुरंत हमारी मेंटेनेंस टीम और हम we will make sure that that gets resolved and that gets rectified. Good afternoon. Good afternoon, sir. भरत पाटील, A1601. Nice to meet you. एक पॉइंट तुम्ही जे मेन्शन केलं की डक्ट तुम्ही आता कव्हर करताय. सो आपला स्टेअरकेस जो आहे, वर गेल्यानंतर एक समोर विंडो आहे. सो तो विंडो खूपच डाऊन आहे, त्याला बाहेरून काय मेश वगैरे असं काहीच नाहीये. सो जेव्हा आता हा माझा मुलगा आहे, जेव्हा आपण जिना म्हणताय का सर? हा, स्टेअरकेस म्हणून वर चढलो आपण, हो की समोरच्या साईडला एक विंडो आहे छोटीशी. हा हा हा, हो, मिड लँडिंगला. हा हा, करेक्ट. तर त्याला फक्त स्लाइडिंग डोअर्स दिलेले आहेत. त्याला बाहेरून जर ग्रिल प्रोव्हाइड केला तर दॅट विल बी बेटर. तो सेफ्टी कन्सर्न आहे, कारण माझा मुलगा जस्ट ऑलरेडी काम चालू केलं सर. ऑलरेडी काम केलेलं आहे चालू. का? ओके, पॉइंट आउट केल्यानंतर आम्ही लगेच चालू केलं. ग्रिलचं काम पण चालू केलं. थँक्यू. Yes. Shall we go ahead? Okay. Okay. Bottle trap and PVC trap. See, the main reason why we have shifted from bottle trap to PVC trap, there are these key. This particular bottle trap is a chrome plated trap, CP trap रहता है, और उसमें there are multiple components that are involved. So what happens is that, so एक ऊपर का बॉडी रहता है, एक नीचे का बॉडी रहता है, and एक horizontal बॉडी रहता है. And this alignment over a period of time, when you are mopping or when you are brooming the floor, कभी कभी छोटा सा भी अगर धक्का लग गया तो उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से लीकेज का चांसेस बढ़ जाती है. 3 years back, 4 years back, 5 years back, when we were doing or rather when we were giving this type of product, our FM team reported frequently occurring problems on this particular issue. Also, what has happened is that anywhere you go, if you have seen this particular bottle trap, this starts rusting after a period of time. और वो कितना भी अच्छा हो लो, कितना भी बुरा लो, वो एक टाइम के बाद वो रस्टिंग करना चालू होता है. You must have observed this. Observe to any hotel or anywhere you go, you will always find this particular component that is rusted. And this particular P-trap that we have given, why we have given it in PVC is because one, plastic does not corrode. It has much longer durability, uska bahut zyada hai. And secondly, it is a simple connection mechanism wherein it has only 2 connections. And to repair or to fix the problem of a bottle trap, you need a certified plumber to only open it because it has a screw on top of it. वो स्क्रू घुमाने के लिए आपको पाना लगता है, उससे स्क्रू वो जो पाना जो रहता है उसको लगता है, तो वो खोलने के लिए आपको वो प्रॉब्लम आती है. लेकिन दिस इज समथिंग विच यू कैन डू इट बाय हैंड ऑल्सो. इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म. PVC makes it durable, it makes it long lasting, non corrosive, and the third important thing is that this P that happens, so this L shape that happens gives a better water seal. Now what is water seal? Water seal is something, why do we have that shape? That shape is given because the gases or the foul smell from the pipes should not enter into the wash basin, because it's a common area from where gases and smell from other areas might come into your into your kitchen sink. तो वो avoid करने के लिए हम ये P trap देते हैं. So this bottle trap after a while was getting problematic, and which is why we have this was a solution that we found out, and we thought of this as an upgrade. We were very happy to fix this, but clearly this was
थोड़ा सा इसका बैकलैश हमें आया, बट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई वी आर डूइंग दिस एट दिस लेवल. So any questions on this? I'm free to ask. I'm free to answer. Knowing about this thing, like when you showed the sample. Yeah. No. So sample flat was in 2018. Correct? नहीं. तो पहले हम क्या करते थे? हम फ्लेक्सिबल पाइप देते थे. फ्लेक्सिबल पाइप क्या होता है कि सिंपल जो अपना नल है ना, जो वेस्ट कपलिंग था है, तो वेस्ट कपलिंग से नानी ट्रैप को हम डायरेक्टली पाइप से जोड़ते थे, उसको फ्लेक्सिबल पाइप बोलते थे. और वो इतना बेकार दिखता था, तो हमने सोचा कि नहीं, अभी ये उसको सीपी का जो बॉटल ट्रैप होता है वो अच्छा दिखता था, अच्छा भी दिखता है, उसको हम यूज करेंगे. लेकिन दिस प्रोडक्ट इन 2018 was a new product at that time, and we thought of using it. We also used it. Other projects जो हमारी facility maintenance team है, we always have a consultation कि दूसरे पर क्या प्रॉब्लम आई है, उसको हम ये प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके we try to make it a notch better every time. यहाँ से कुछ सीखूंगा, आगे इंप्लीमेंट करूंगा, वहां से कुछ सीखूंगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा. So it's a part of improvement. This is not to save any cost or anything, but this is a part of our improvement because our FM team, our facility maintenance team were having real problems in maintaining and managing this bottle. Yeah. You have made the changes, right? And for good reason. Don't you think you should have informed customer before that? I agree. And I think in January when we had our expo के time पे we had mentioned this as a part of our expo कि we are going to use this as a bottle trap. ये हमारे expo के exhibition में भी था. January में. Like I was not there, right, at that point of time. It should be communicated through mail, right? Sure. My apologies for not communicating it, but our intentions are not wrong. No, it might be, right? But communication is important. Important. I agree with you. I agree. We will lesson learned. We will henceforth communicate all the whatever that we are doing on site every day. We will make an attempt. But lesson learned. We will communicate important things. It's important as a home user to know what changes they're doing. But I would again like to re-emphasize that our intentions are not wrong. We don't want to save or anything here and there. This is a improvement that we consider that we are doing based on our previous experiences. Because if we are going to do the same thing here, then what have we learned? So we should have informed. I agree with you. I know. My apologies for that. त्याला होतं ना सर, जानेवारीच्या वेळेला जेव्हा आपण फ्लॅट केला तेव्हा ब्राऊनच होतं. काही लोकांनी असं कन्सर्न रेज केलं होतं की तुम्ही आमच्या फ्लॅट करू नका, आम्ही तुम्हाला कलर ग्राउट आणून देऊ, तुम्ही तो वाला ग्राउट करा. त्यामध्ये पण त्याचा थोडं मी कन्फ्युजन काय झालं ते सांगतो की आपण मॉक फ्लोर when we did the mock apartment, I think Jan February when we did the at that time we had done it. Later on, I think during the plantation event, I think I met a few customers who said that
आमच्या ह्याच्यामध्ये झालं नाहीये. The grouting is not done. So can we do our own color? I said, if it is not done, then you can do it. But if it is done, then you cannot do it. So the message that got circulated was कि अरे बाबा पूरा option मिला, you can do whatever color you want. ऐसा नहीं है sir. Don't do, because right now the ground is almost done. We cannot give any options for any form of customization to change the color. But I agree with you. We should have informed or intimated this. Some things we are also learning. Henceforth, we will be, informed higher. But our intentions are clear. Please doubt not. Shall I go ahead? Yes. Tiles and grouting. देखो अच्छा आ गया. So why brown and why not white? So उसका reason है कि see, if you see the one white side is the white grouting that was done. So what happens is over a period of time that white space, white grout we give starts becoming dirty, brown color, and that dirt happens in a very mixed match fashion. बहुत खराब दिखता है after a period of time. मुझे flat देने में कोई problem नहीं है white तभी, अभी नहीं, तभी, अभी नहीं है. अगर मैं देता था 4 months or 5 months into the cleaning, you would have said कि अरे ये क्या खराब दिख रहा है, this is looking so bad, because these are some of the images that we have from our previous projects में ऐसा दिखा है कि ऐसा ऐसा है. So we thought of, again, as a product improvement, as a improvement, we thought of doing this. But again, there is no intention कि there's anything. But what happens because of brown, even if there is dirt on it, it's not visually इतना खराब नहीं दिखता है, because it's uniform. The brown color it's uniform, and whereas on white it starts looking very bad. So, any questions on this, or should I continue? जी. Sir, 3 mm. कसं असतं की any spacer that comes with at least 3 mm spacer. So 2 mm or 1 mm का spacer मिलता नहीं है market में. Minimum spacer that you find is 3 mm. So ideally people go with 5 mm, 10 mm also. So even if you guys are all well traveled, I'm sure you must have visited foreign countries also. So वहाँ पे भी जाओ तो you'll see a large gap between tiles. हमेशा एयरपोर्ट पे देखो, कहीं पर भी देखो, तो वो जो गैप है, तो वो गैप जनरली 5 mm के ऊपर ही रहता है. बट यहाँ पे we found a supplier was giving us 3 mm का spacer, so we use that particular. कमर्शियल में है जनरली. अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अब्रॉड में तो मैं रहा नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा उसमें मालूमात नहीं है. बट कमर्शियल में है, बट यहाँ पे 3 mm स्पेसर इज द मिनिमम दैट वी कैन गो. वो जो स्पेसर एक्चुअली व्हिच आई हैव आई थिंक वो मोर देन 3 mm सर, इट्स अप टू 5 लग रहा है. एंड जो मैं थोड़ा बहुत गूगल पे पढ़ा, सो द आइडियल फॉर द डिजिटल फ्लैट इट इज आइडियल स्पेस बिटवीन 2 tiles is 1/18 inch, which comes around 1.2 or 1.5 mm. So इसके पीछे what is the reason कि जो space हमने बढ़ा है? Because in sample flat also the space was comparatively less. Yeah. I have images also. Okay. But in our case the space was increased significantly. उससे क्या हो रहा है सर? वो जो brown patch है basically it's become more visible, and which मतलब उससे थोड़ा aesthetics थोड़ा सा I feel कि थोड़ा सा damage लग रहा है. I agree. It's hampered. Aesthetics, I agree, but from a functional standpoint of view, the reason why we give spacer is that for high rises, again, so this product 2018 high rises were not very frequent tabhi, multi-storied aluminum formwork. When this formwork came in the last 3 years, we have come across incidences in other projects, not ours, but other projects. I don't want to name those projects, but in other projects, we have seen that because of temperature variation, expansion and contraction of the structures, the tiles were started coming off. Because जब structure expand or contract होता है, तब it exerts pressure on the tiles. And if there is no spacer for the tiles to cater to that expansion and contraction, then the tiles will simply come off. So this issue was observed, was highlighted by CQRA, who is our quality expert, because they are working on so many other projects, not just ours, but other projects also. So which is why there was a need to give spacers. Now, when we gave this spacer, the minimum spacer that we found in the market was, I mentioned, of 3 mm spacer. So we have used 3 mm spacer. It is not a 5 mm spacer.
So this 3 mm spacer we gave, and the reason why we gave the brown color grouting is because of this reason, is because white agar hota hai, so in a period of literally 4 to 5 months, in some other of our project, we got a similar complaint कि सर 4 महीना में ये सफेद जो है वो brown हो रहा है, उसको हमको brown करके दो. तो फिर then then we thought that we should use that experience and use it good for this building. So that was the main reason. Yeah. What are the quality check you have done so that you know that these spacing is even across the flat? Yeah, so I can help you with the spacer. So what is a spacer? So spacer is it's like a PVC plastic part, very hard plastic, and it basically 3 mm ka rehta hai, and it's in a plus shape sign. So plus shape sign. So when you start laying those tiles, after one tile you have to put one spacer, and then only you can put another tile next to it. And the reason of a spacer is that because it maintains uniform width. Otherwise, to the naked eye, it is impossible to differentiate between 3 mm or 4 mm. So even if you see here anywhere on the floor also, if you see, all the spacings are exact and accurate at 3 mm. There will not be 5 mm, there will not be 10 mm also. Because visually, if you see, you cannot make it out. So the quality checks that you were asking, we have those plastic spacers that we have used. They are more like so joint pe hoga udhar, wahan pe grout chढ़ jata hai, but the spacer is 3 mm. So it's a plastic PVC, hard PVC material that we use to space evenly between tiles. Seen few people sharing photos of uneven spacing as well, right? No. So we have compulsorily used spacers. Without spacers, we cannot lay tiles because that spacer is an integral part and process of our doing tiles. But ऐसा तो नहीं है. All the spacers are 3 mm spacer that we used. Go ahead. Okay. So this is another thing that we've done for the windows, wherein the passages, especially on the higher floors, we've seen that rain was coming inside the main passage. So we have fixed windows on all the floors so that wo side se, wo direction se pani andar na aaye. Right. So society maintenance, I think it's an important point. So we'll be collecting 1,25,000 as maintenance amount, and this will be divided over 3 areas. One is your individual building, 42,000, common areas 51,500, and EMP is 31,500. We will be forming separate accounts for each of these 3 sub-accounts, and there will be a fixed deposit, and every that will be created, and the interest of this fixed deposit will also go to the society. So this is how we'll be doing. We also have Amol Shenge, who is our maintenance manager, designated maintenance manager. Amol, if you can raise your hand. Yeah. So Amol is here along with Girish and Deepak. So Girish, if you can raise your hand. So Girish is our senior most project manager. Now he's taking care of facility maintenance at the head, and Deepak Patil, thoda bade hai. Put it. Yeah, okay. So Girish, Amol, and Deepak are a part of our FM team here. We have already started the routine maintenance chores such as housekeeping, security, services, the water flow, everything, all the ACs, all the warranty certificates, the entire file of all the equipments are being given to this team. The maintenance will not, from the society account, will not start now, because I understand some of you have taken soft possessions, some of you have paid this maintenance amount, and you are worrying whether this maintenance amount, this whatever maintenance that we have started now, will be deducted from that account. The answer is no. We will be starting the maintenance after we get the OC. We are expecting the OC. I'll tell you when, the next slide. But the first date of starting the OC, I think by around 1st of November, is when we will start maintenance
expenditure from the account. Right now, though, we have started maintaining the project, but this is at VJ account. But eventually, from 1st of November is what our plan is to start it from the maintenance account. Any questions on maintenance? So I'll tell you. This actually is not What's too the high. reason? Yeah. So 1,25,000 roughly translates to about 3 rupees per square foot per month. So this is, we've taken it for a provisional period of 3 years. So 36 months च्या हिशोबाने हे साधारण ही अमाऊंट घेतली आहे. माझा अनुभव असा आहे की हे 3 वर्ष जरी आम्ही घेतली असेल तरी पण ही जी अमाऊंट आहे ही चांगली वापरली गेली, व्यवस्थित वापरली गेली तर ही 4 वर्षापर्यंत पण टिकते. साधारणपणे आपण वाकड एरियामध्ये एनीवेअर यू सी the maintenance hovers between 2.5 ते 3.5 साधारणपणे, plus minus little bit amount here and there. But what we are doing is by installing motion sensors, by giving solar photovoltaic, by recycling the water for flushing, by using all these good technologies, we are going to reduce our maintenance cost so that we are well within the budget of 3 rupees. Why I'm saying 3 rupees is because that's the standard norm. And this amount is also for a provisional period. My experience is that for typically about say 300 apartments or 350 apartments, this amount, this corpus itself in the next 3 to 4 months will be 4 crore rupees. 1,25,000 into about 350 apartments. So this 4 crore rupees is not VJ's money. This is society's money. VJ will be creating fixed deposits of these 4 crore rupees in quarterly installments of 3 lakhs. So 3 लाखाचे आम्ही मल्टिपल एफडीज करणार सोसायटीच्या नाव. म्हणजे काय होतं की मंथली किंवा क्वार्टरली इफ यू नीड से 3 lakh rupees, you are only breaking that many FDs. So that the first FD that happens on the first day gives you the best rate of return or rate of interest when you're breaking it after 3 years. So this is a very good model of FD and interest generation. And this additionally also subsidizes your cost of maintenance. So this was my take on overall. Yeah. नेशनलाइज्ड बैंक में एफडी करेंगे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बैंक ऑफ महाराष्ट्र. Yes. बिकॉज ऑडिटर्स जो होते हैं अपने वो सजेस्ट करते कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक में भी एफडी करें. So उसमें कैसा है कि see the process of this FD is that we currently have account in Bank of Maharashtra. We are their client. So Bank of Maharashtra में right now the society is not. Society formation happens after we get the OC. We have taken signatures. So after we get the OC, we will submit the application to the register office. After about 3 months of OC, we get a society registration certificate. After about 1 month of registration certificate, we will apply for society's PAN card. Okay. And after society's PAN card, we can open into society account in cooperative bank. Okay, okay. That is the law. Because the interest is more in cooperative. 0.5%. I agree. But we will shift this entire corpus over there once we get the PAN card in the name of society. Okay, got it. Thanks. Shall I go ahead? Okay. All right. PCMC water connection was another issue. So we have already laid the PCMC water connection pipeline right from the main road all the way till our water tank. It is a 4 inches DI ductile iron pipe that we have laid from the main water pipeline of PCMC to our water tank. Now the process is that after we get the OC, we will be making an application to the authority, to the water department for application of getting water connection. And my experience is that in about 1 inch, 4 connections we can get.
but we will try for more. And for that, we will invite some, Rahul Kalate also will invite him here. थोड़ा सा आप भी उनको request करेंगे. Maybe even I'll try to persuade him. But we will try to get 2 connections more. But right now, 1 inch 4 connections we will get, which will be sufficient for the drinking and the domestic purposes. We also have, as I mentioned, from a water point of view, we have borewells, additional borewells, and we are also going to recycle the treated water for flushing purposes. So entire water balance, if you see, it's not going to cause us any pinch on our maintenance account also. Yeah. नाही 2 इंच नाही. सो कैसा होता है 4 इंच म्हणजे कसं असतं 1 इंच कनेक्शन. सो हा जो पाईप येतो ना, ह्या पाईपला एक एंड फ्लॅंज बसते आणि त्या एंड फ्लॅंज मधून तुम्हाला 1 इंचीचे 4 कनेक्शन मिळतात. ओके. आणि मग नंतर अप्रुव्हल झालं की मग अजून 2 कनेक्शन त्याच पाईप वरती येतात. ओके, म्हणजे ही जी पाईपलाईन टाकलेली आहे ते 6 इंचाचं पाणीचं म्हणजे ओके. सो सो हायड्रोलिकली कसं असतं की आता एखादी पाण्याची टाकी आहे, बरोबर. त्या पाण्याच्या टाकी समजा कॉर्पोरेशनची एखादी पाण्याची टाकी आहे. त्या पाण्याच्या टाकीतनं समजा एक 6 इंचीची लाईन आली आहे. त्या 6 इंचीच्या लाईन मधून 100 कनेक्शन पण असू शकतात, 200 कनेक्शन पण असू शकतात. आणि ती जी कनेक्शन आहे त्या कनेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द वॉटर प्रेशर अँड हाऊ मच वॉटर कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू गिव्ह. आणि ते देत असताना ते वॉटर कॅरिंग कॅपॅसिटी बघतात. म्हणजे समजा आता हायड्रॉलिक हेड समजा इथे जास्ती असेल किंवा त्यांनी काय एखादी बुस्टर पंप किंवा सिस्टम असेल तर ते जास्ती कनेक्शन पण देऊ शकतात. सो 1 इंची म्हणजे हा डायमीटर वाईज नसतो. 1 इंची इज अ फ्लो रेट. सो तो फ्लो रेटला 1 इंच म्हणतात. डायमीटर नसतं, फ्लो रेट असतो. पाईप का डायमीटर? नाही. मी आता आपण म्हणतो ना किती इंची बोरवेल आहे, तर तो बोरवेल इंच नसते. ते बोरवेल इंच इज अ फंक्शन ऑफ युअर फ्लो रेट. डिस्चार्ज किती आहे इन क्युबिक मीटर्स पर मिनिट. Shall I go ahead? Okay, OC date, important again parameter. So right now as we speak, मला आता फक्त I think 2 NOCs बाकी आहेत. ते 2 NOCs I'm expecting by the end of this month. 1 NOC is coming from Bombay and 1 NOC will be coming from PCMC office. But from next week onwards, we are planning visits of corporation also. My expectation is that by 15th October, we should get the OC in hand and we should be ready by 15th of October. Any questions on OC so far? No, I don't think so. So his question is about whether any issue on another lockdown, but I don't think so. No issue. I feel confident on getting it by 15th October. I know. Yeah. Right? Yeah. Hardik Shah here. Hi, Hardik. I am from A1 1108. So one question is, what will be the procedure of giving the punch points and closure of the punch points before we get the actual OC? Good question. So, so what we'll be doing is that, so what we have started now is that we have started snagging activities. So minor points, कहीं पे पेंट खराब है, कहीं पे स्क्रैच आया है, कहीं पे कुछ मतलब minor जो issues है, those are not quality related, but more to do with workmanship related minor जो points है. So we have with us Sachin Sagar. Sachin, please come here. So Sachin is an engineer. Sachin has a dedicated team of his own supervisors and engineers, and he will now be a part of the CRM team, because generally CRM lacks engineering answers or knowledges or any questions. So Sachin, being an engineer, he will be a part of CRM team. The process of handover will be such that first we will be finishing from a overall engineering point of view. So Mahesh Anbule is our project in charge here. So Mahesh will be giving the possession or rather the delivery to Sachin, and Sachin will checking the apartment in your eyes.
at a finer level, at a deep level, then we will be taking out snags. Internally, we'll be doing a snagging of all the points, and then we will be doing a desnagging. Because what happens is that, again, we don't want emails coming in कि देखो ये ऐसा quality है. थोड़ा बुरा लगता है कि यार ऐसा नहीं है, but अभी ठीक है. It's part and parcel of our work. So सहन तो करना पड़ेगा. लेकिन but this is the procedure that we are following right now. So as and when these flats become ready for possession, even after 15th October, we will inform you that now you can come and you can take your possession. Until then, we won't be issuing the possession. But my in addition to my question, what my point was, ki, let's say if anything is not with respect to what it should be with as per the design. Let's say I have one specific question in 1108 common bathroom for the heater. The point is on the opposite wall of the where the plumbing point is given. The plumbing point is on one wall and the plug point is on the opposite side of the wall. I'm not aware. Let me check. Yeah. So this kind of We'll issues, how check. will get Let me resolved? check. I'm not aware of this. We'll check this point. But overall, I think the process will be that we will inform you when the possession is ready. And based on this, then you can come and we can start the possession process. Nitesh Patil is also here along with Sachin Sagar. And we will be giving you possessions only internally. We have desnagged all the points. But in the meanwhile, as I mentioned, if someone is in a hurry to take or if someone wants to take, we can facilitate that also. But please be in mind that that type of possession may have one or two points such as अरे paint यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा ही ऐसा है. तो वो ऐसी चीजें हो सकती है, but we are willing to cooperate on that level also. But we will desnag everything and then we will call for possession. We'll get a fair idea on these dates by the end of this month, because our internal target is to close the snagging by September end so that we can come to a better conclusion on when the final possession we can give. Yeah. Shall I move on? Yeah, he has a question. सर एक क्वेश्चन होता, जे आपण आतमध्ये प्लास्टर केलेलं आहे, आता जसं सांगितलं काय की डिफेक्ट वगैरे असेल तर आपण तुम्ही पहिला रेक्टिफाय करा आणि मग तुम्ही ओनर्सना बोलवणार आणि परत आणखी काय असेल तर रेक्टिफाय करून देणार. बट आता जे तुम्ही चेकिंग वगैरे काय करता तर त्याच्यामध्ये काही असे चेक पॉईंट्स तुम्ही घेतलेले आहेत का? कारण मी जेव्हा लास्ट मंथला मी जेव्हा व्हिजिट केलं होतं मी प्लास्टर असं थोडंसं वाजवून बघितलं, सो इट वॉज हॉलो इनसाइड आणि ते मी इन्फॉर्म पण केलेलं आहे, बट आय थिंक इट इज नॉट येट रेक्टिफाईड. वॉलचं होतं का सिलिंगचं होतं? नाही वॉलचं. बरं. सो जेव्हा तुम्ही प्लास्टर करता तेव्हा काही चेक पॉईंट वगैरे असं काय करता का? काही हो. टेस्टिंग करता का? सो आता मी ह्याच्या आधीच्या एक प्लास्टरिंगचा ते जो मी बघितलं, दाखवला, सो त्याला तुम्ही आम्ही full test करता. हा पुल टेस्ट करतोच आहे. बरोबर. पण ती जी पुल टेस्ट आहे ती पुल टेस्ट सॅम्पल साठी असते. सगळंच पुल करून आम्ही परत नाही लावत. Agreed. करेक्ट. सो कुठेतरी एखादा वेग पॉइंट राहिलेला असेल आणि हॉलो म्हणजे कसं असतं की हॉलो आवाज येणं किंवा हॉलोनेस किती आहे किंवा काही हे थोडंसं आपण सर्टिफाय असं नीट डिटेल करता येत नाही जनरली. त्याला क्वांटिफाय आपण नाही करू शकत. हा कारण पण तो जो पोर्शन हा म्हणजे आता थोडंफार डबडब वाजलं पण ते पडतंय का नाही पडत आहे का काय आहे ह्याचा आपण असर्टन करता येईल. सो केस स्पेसिफिक आपल्याला हा विषय घेता येईल. हा कारण कसं ते खूप मोठा पोर्शन आहे की जिथं मी वाजून बघितलं ना, एका ठिकाणी सापडलं मला, मी असंच फक्त वाजत गेलो, ऑलमोस्ट एक 2 फुटाचा जो पोर्शन आहे हा तो पोर्शन मला तसा दिसतो. एकदा बघता येईल. वी विल हॅव अ लुक. सो मी इन्फॉर्म पण केलेलं आहे. हो. सो नाही कसं आहे सर, जेव्हा तुम्ही टेस्टिंग किंवा चेक पॉईंट जेव्हा करता, so I नाही would सगळे आम्ही भिंती वाजवून बघत नाही नाही. नाही सगळं नाही म्हणते मी, पण जेव्हा तुम्ही वर्कमनशिपच्या ज्या गोष्टी बघता तेव्हा हो. आय वुड रिक्वेस्ट की ह्या गोष्टी पण तुम्ही हो. mention ह्याच्यात आम्ही इन द कोर्स ऑफ टाइम आम्ही 2-3 गोष्टींची काळजी घेतो प्लास्टरिंग करताना. एक तर हे बॉन्डेड प्लास्टर लावलंय का, नंबर 1. कारण बॉन्डेड लावणं खूप गरजेचं आहे आणि आम्ही खात्रीजमा सांगू शकतो की आम्ही हे बॉन्डेडचं जे आपण ॲडेजनला जे लावलेलं आहे ते आम्ही लावलंय. सेकंड थिंग इज दॅट जिप्सम करत असताना तो माल कसा कालवलाय, कधी लावलेला आहे, कशा वेळेला लावलेला आहे, ह्याचे पण आमच्याकडे इंटरनल चेकलिस्ट आहे. त्याच्या पद्धतीने आम्ही चेकिंग करतो. 1-2 ठिकाणी डबडब वाजणं इज नॉट अ प्रॉब्लेम. पण
हा मी तुम्हाला अगदीच ते खालती लोंबताना दिसलं तर आय विल इट विल बी अ कॉज ऑफ कन्सर्न. पण अदर दॅन दॅट दीज आर मायनर इश्यूज आणि ह्याचा फार असा काही मोठा त्याचा इफेक्ट पण नसतो. नाही पण आपण ते रेक्टिफाय करणार आहोत की कसं? नाही हॉलोनेस इट डिपेंड्स. मी अगेन म्हणलं की केस स्पेसिफिक आपल्याला असेस करावं लागेल. हॉलोनेस नुसता वाढत असेल आणि तो पडत असेल किंवा क्रॅक्स पण नसेल तर गरज नाही. कारण हॉलोनेस किती हॉलो आहे आणि किती हार्ड आहे हे थोडं आर्बिट्ररी होतं. पण आम्ही आमच्या क्वालिटी इंजिनियर्स कडून चेकिंग करून घेऊ. केस स्पेसिफिक आपल्याला ठरवता येईल की ते किती गरजेचं आहे. कारण नुसतं रिप्लेस करायला म्हणून रिप्लेस करायला काही पॉईंट नाहीये. देर इज नो रिझन. आणि नुसतं वाचते म्हणून रिप्लेस करायचं हे पण मला टेक्निकली बरोबर नाही वाटत. आपण केस स्पेसिफिक हे प्रश्न आपण बघता येईल. या खाली मागे एक प्रश्न आहे. सर एक ऑब्झर्वेशन आहे की जेव्हा आपण दरवाजा बंद करतो आणि जी टाईल आहे त्या दरवाजा बंद करणे आणि टाईल मध्ये थोडा गॅप आहे ऍक्च्युअली. आणि जेव्हा आपण जर विचार केला दरवाजा बंद केला तर टाईल सुद्धा क्लोज व्हायला पाहिजे. पण असं दिसण्यात आलं की तिथं गॅप आहे किंवा काही गोष्टी बोलू शकतात. तर हे इंटेन्शन आहे का? नाही नाही परत सांगा. सॉरी समजलं नाही. आता आपण जेव्हा दरवाजा क्लोज करतो कोणता दरवाजा? मेन डोर. मेन डोर. ओके. आता तिथे एक टाईल असते थोडी हायटेड असते. बरं. डोर क्लोज व्हायला पाहिजे. हा हा. पण ते तसं नाहीये. तिथं थोडा गॅप आहे त्या टाईल मध्ये. सो कसं असतं सर की जनरली आपण होतं असं की जेव्हा एखादी छोटी गॅप का ठेवतो त्याचं कारण आहे की दरवाजा जो आहे किंवा प्लाय जो आहे त्याला थोडंसं आपल्याला टॉलरन्स द्यावे लागतात. कारण ती म्हणलं तरी हे शेवटी लाकूड असतं. किती म्हणलं तरी ह्याला थोडंफार मायनर त्याला गॅप नाही ठेवला तर तो घासायला लागेल आणि ते नीट बंद पण नाही होणार नंतर. म्हणून हा थोडासा प्ले आपण डिझाईन करूनच ठेवलेला असतो. नाही पण मला थोडा जास्त गॅप दिसतो. इन्सेक्ट किंवा बाकीच्या गोष्टी येऊन असतात तिथं असं वाटतं. तर इन्सेक्ट जनरली अपार्टमेंट लेवलला हे असे हा प्रॉब्लेम येत नाही. नाही पण कन्सिडर केलं किंवा मग वरच्या साईडला रिफ्युज एरिया ऍक्च्युअल मध्ये असं नाही की फक्त आपण असं कोणी किंवा एवढी मोठी गॅप तर नसेल खाली 4 इंचाची वगैरे गॅप आहे का? चार बोट. नाही नाही 4 इंच म्हणजे एवढी गॅप आहे? नाही तेवढी गॅप. आता जेमतेम मला असं वाटतंय 2 ते 5 mm वगैरे असेल. 5 mm आसपास असेल त्याहून जास्ती गॅप आपण ठेवत नाही. हो ना मी तेच सांगतो की ते 5 mm आसपास गॅप असते त्याच्याहून जास्ती गॅप आपण नाही ठेवत. ओके. की आम्ही जिथं सध्या राहतो तर आम्हाला कुठं ऑब्झर्व झालं नाही की गॅप असतो. आता तुम्ही म्हणताय की प्लायवूड आहे किंवा वूड आहे थोडंसं त्याला मार्जिन आपण देतो जनरली कटिंगच्या वेळेला. तो मार्जिन असतो. आणि इनफॅक्ट आपण साईडला तुम्ही बघितलं तर साईडला आपण रबर बीडिंग दिले. ते रबर बीडिंग देण्याचंच कारण हे आहे की बरेचदा साईड मधून गॅप जी राहते ती क्लोज करण्याकरता आपण रबर बीडिंग दिले. ठीक आहे. आणि खालची जी बॉटमची जी गॅप आहे ती बॉटमची गॅप आपण थोडी ठेवतो. त्याचं कारणच हे आहे की म्हणत तसं त्याला थोडीशी एक आपल्याला मार्जिन द्यावं लागतं एक्सपान्शन कॉन्ट्रॅक्शन साठी. पण हर एक फ्लॅटला कन्सिस्टंट नाहीये. फ्लोर ऑब्झर्व केलं एखाद 2 mm 3 mm चा फरक राहू शकतो त्याच्याहून जास्ती देणार. बट ठीक आहे चालेल सर. आणि इथंच मला लिकेज दिसतंय सर. नाही ठीक आहे आपण बघून घेऊ. ओके ठीक आहे. वी विल रेक्टिफाय. पुढे जाऊया. सो अमेनिटीजचा एक अपडेट होता. सो अटॅच पोडियम्स जे आहेत ते वी हॅव 2 अटॅच पोडियम्स. So both these podiums we are targeting to complete by September. The all amenities and the central podium we have started with the waterproofing, but sometimes because of rain the waterproofing cannot be done in wet condition. So we don't want to take a chance on any wrong way of doing it. So but we have finished whenever we got a dry spell. We have finished that part. We have started with the screening work also. All the designs as per brochure are also ready. All the materials have also been ordered. We are hopeful and positive that this work will be completed by December end. Is what the central podium update is. Any questions on any amenities part? Yeah. कन्सर्न असा आहे माझा सेंट्रल पोडियम आहे आपला. तर माझा फ्लॅट आहे A2301. सेंट्रल पोडियम मधनं मास्टर बेडरूमचा जो टेरेस आहे इझिली ॲक्सेसिबल आहे. आय कॅन लाईक क्लाइंब दर. व तिथे मी CRM टीमला कॉन्टॅक्ट केला. दे मेन्शन की मॅनेजमेंट टीम इज ऑलरेडी कन्सिडरिंग दिस. ओके.
Yeah. So regarding safety and security and privacy for apartments that are facing podium, there are 2-3 things that we'll be doing. One, we'll be fitting grill on access areas. Please note. So top central podium वरून पण in case accessibility असेल terraces मध्ये तर तिकडे आपण grill लावून घेऊ. खालचे जे पोडियम फेसिंग जे फ्लॅट्स आहेत त्यांना आपण डोर्स पण देतोय, ऍडिशनल सेफ्टी डोर्स देतोय, so that there is a safety also gets maintained. And also from a privacy point of view, there are some areas and we have received some concerns regarding the visibility. So we are going to start the work of vertical fins. We have done some, we are trying to, so basically आपली visibility cut करतील into the areas where you can easily see some kitchen, bedroom तर अर्थात podium मधून दिसत नाही, पण जिथे जिथे आपले किचन्स दिसत आहेत फ्रॉम पोडियम्स, इट कुड बी द सेंट्रल पार्किंग पोडियम और समवेअर, तिकडे वी विल बी प्रोव्हाइडिंग विथ फिन्स फॉर व्ह्यू प्रायव्हसी. या, येस प्लीज 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 माईक. Right. So, couple of things. You said wherever there's a podium side flats, you are giving a safety door. So, up to which floor? Just the first floor, only first floor. First floor. And second floor doesn't mean. Second floor ला नाही देते. Second floor ला नाही आहे. Okay. Because that is also upon to नाही, the safety concerns. सर फर्स्ट लाच देतो आपण, सेकंड ला देत नाही. कारण जनरली कसं आहे की घेणारा फर्स्ट फ्लोअरचा जो आहे तो ही इज ऑलरेडी टेकन दॅट फ्लॅट कन्सिडरिंग दॅट दिट इज अ पोडियम फ्लॅट, कन्सिडरिंग दॅट दीज आर दीज थिंग्स. पण जनरली दी प्रायव्हसी सॉरी सिक्युरिटी इश्यू हा सेकंड फ्लोअर पर्यंत जात नाही. आणि प्लस वी ऑल्सो हॅव CCTV नेटवर्क ऑन ऑल द पोडियम एरियाज at all the common areas, plus our security podiums, our attached podiums and central podium have access control, card, biometric and alphanumerical. So एवढं करून अगदीच कोण भारीच स्टोर असेल अगदीच म्हणजे तर अवघड होईल, पण सेकंडला नाही देत सर. My initial observation, there is a difference between the things provided on A1 and A2 podium, like the kids play area or the open gym. I mean, this is initial, you might be installing the same thing, but the things are different. What I saw. Yeah, no. So I think so. All the entire podium is as per brochure. Brochure la je, if you have seen the brochure, we mention amenities. So the same amenities, we are following the same logic. There is no deviation of any form of amenities as per brochure is what we are building. So there could be some here or there, changes, but there's a play area both sides. Organic farming is there on both levels. Open gym is also, I think, there. So most of the things are common, and all the amenities are done as per brochure. And the last thing, you have changed the mandir location. In the motion, it was near the entry gate. Mandir location, see, so what has happened is that right now the mandir location, we've taken it on this side. On the other side, the reason is that that area was becoming too congested. So we thought of shifting it on the other side. But again, mandir will be there. Acha hoga. We're planning to have a very nice setup for the mandir also. So considering minor shifting or location shifting. So just changed the entire. So minor. But mandir cancel kiya aisa nahi hai. No, but not cancel. Minor. Changed the location. Minor location we've changed. Yes. Not minor. You have This changed is the entire location. No, I know, but that is to have a better design. The intention was not to give a reduced design. The intention was that in front of the mandir we can have some social gathering also. Because right now the mandir in the original design was a bit isolated, but right now we've brought it on the other side, on the other side of the podium. But it will be nice. It will be very nice. Don't worry. So I was speaking this same point with Aditya last time, and he said we can build another small Hanuman Mandir in the same location. We'll explore. So I will keep you posted of that. We'll explore. तो एक point फक्त लिहून घे की original मंदिर location, revised मंदिर location, and whether we can have a Maruti Mandir also. We'll explore that. We'll explore. 100%. Any questions or should I go ahead?
Okay. Okay. Right. So safety and security. Again, as I was mentioning, that we are providing fins for privacy. These fins will be located on the entire podium at strategic points, so that viewing into the apartment direct from the podium parking areas will be for a privacy point of view. Also, from an aesthetic point of view, we are having some fins on the sides also. So if you see the central parking here, building here, on the sides we have an open area. We'll be having some nice aesthetic, good-looking fins also on the other side. We're hoping that this work will also be finished soon. Yes. Question. हाँ सांगा ना. ऑन ठेवा की रे. माइक ऑन करो. अनायसे तो पीपीटी मध्ये आलाय तुमचे फोटो. या. त्याच्या खाली जे पार्किंग आहे त्याच्या वर काही तुम्ही करतोय. मला आलंय बरेच बरेच मेंबर्सनी रिक्वेस्ट केली आहे. सो ते पण आम्ही करतोय. सो ह्याच्या खालती एक कव्हरिंग आम्ही करतोय आणि साईडला पण काही पार्किंग आहेत की जे डबल हाईट मध्ये आहेत, तिकडे पण आम्ही थोडं कव्हरिंग करतोय. येस. नितेश. Dhanashree, can you ask him to control the volume neatly? I know, but then when the mic is going, he should turn it on. आणि mic गेल्यानंतर he should turn it off. हॅलो. Yeah. साईडला जी पार्किंग आहे त्यात काही पार्शियली 10 फीट वरती स्लॅब आहे, काही पार्शियली 20 फीट वर. I was just telling about that, sir. Yes, We're doing that. सेम प्लस व्हॉट आर आपण तिथं फायर फायटिंग नॉझल्स प्लेस नाहीत त्या पार्किंग मध्ये. नाही, गरज नाहीये. सो जनरली जे फायर फायटिंग नॉझल्स असतात हे पोडियमच्या खाली आपण देतो, पण लो बिल्डिंगची गरज नसते. आता हा त्यांचा नियम आहे, का नका विचारू. नको, कारण बाकीचे जे पार्किंग ऍट 10 फीट हाईटला ज्यांची स्लॅब आहे त्यात ऑलमोस्ट एव्हरी पार्किंग मध्ये. हो, नाही, बट दॅट्स फाईन. सगळ्या पार्किंगला द्यायलाच पाहिजे असं नसतं. हे ऑड स्पेसिंग नसतात. सो ते स्पेसिंगच्याच प्रमाणे आपण करतो. थँक्यू. या. हॅलो सर. सेफ्टी रिलेटेड एक क्वेश्चन होता. जे आपली साईड वॉल आहे बेसिकली, तर म्हणजे ॲज पर जे मी वाचलेलं आहे त्यानुसार की नॉर्मली स्टँडर्ड रेसिडेन्शियल एरियामध्ये इट्स 8+2 मीन्स 8 फीट हाईट प्लस 2 फीट त्याला ते सेफ्टीसाठी एक वायरिंग वगैरे वायरिंग मेश टाईप वगैरे येतं. सो आपल्या इथे हाईट कम्पॅरेटिव्हली लो आहे, त्याचं रिझन स्पेसिफिक काय? नाही, सो जनरली जी असते ती 6 फीट असते, 1.8 मीटर्स असते. सो 6 फीटला जनरली 4 फीट प्लस 2 फीट हाच नॉर्म आहे. आपण आय थिंक वी आर ॲट आय थिंक अबाउट 9 फीट ऑर सो. सो पण दिस इज द स्टँडर्ड हाईट ॲज पर रूल्स ऑल्सो. बिकॉज याच्यातून म्हणजे इकडून एखादा मायग्रंट एंट्री घेण्याचे चान्स आहेत एवढ्या हाईट? नाही, काय कोण येणार नाही. अँड आला तरी त्याला चहा पाजायचा आणि पाठवायचं घरी, काय त्याच्यात करायचं. अँड सेकंडली सर, हा जो आपला पॅसेज आहे ज्याच्यातून आपण वॉक करू म्हणजे डाऊन बिल्डिंगच्या बगलचा हा जो मधला स्पेस आहे, याच्यामध्ये काही टाइल्स वगैरे येणार आहेत की हा असाच राहील? बिकॉज हा जो मधला नाही, तो ट्रेमिक्स आहे. तो ट्रेमिक्सच आहे. तर त्याच्या कोणता म्हणताय? जे ग्रास पेवर्स आहेत ते ग्रास त्याच्या खाली जो जिथे उभे आहेत ते. हा नाही, तो ट्रेमिक्स ड्राईव्ह आहे, तो फायनल आहे. दॅट इज अ फायनल सर्फेस. टाइल्स नाही येणार. बिकॉज ऍक्च्युली आपला यशविन हिंजेवडे मध्ये मी फोटोज वगैरे पाहिले त्यांचे, त्याच्यावरती आपण अशा टाइल्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. नाही, टाइल्स नाही आहेत. सो मधला यशविनला बघितला असेल तर तो मधला जो आहे तो अशामध्ये सर. हा नाही, माझ्याकडे फोटो पण आहेत. नाही, हे पोडियमच्या वरचे आहेत सर. तुम्ही जे दाखवताय ना ते पोडियमच्या वरचे आहेत. हे पोडियम नाही ना, हे आपले ग्राउंड लेवल आहे. नाही, ग्राउंड लेवलच आहे सर. नाही सर. ग्राउंड लेवल नाही, तो पोडियम आहे. आणि खालती जे आहे ना ते खाली आपण जे दिले तो सेंट्रल ड्राईव्हवे आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला पेवर्स आहेत. तो पण ट्रेमिक्स मध्येच आहे. जमिनीच आहे ना सर. मी 5 वर्ष केलंय काम त्याच्यावर. पण नाही, पण हा सगळ्यात ड्युरेबल सरफेस असतो. हा सेटल होत नाही, त्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही. कारण जनरली डांबरी रस्त्यांना त्रास होतात, नंतर खड्डे बसतात. तर हा एकदम खणखणीत सरफेस आहे, ह्याला काही होत नाही. या.
Hello. Yes, Yeah, sir. I am Nitesh from A1 404. Yes, Nitesh. So as per the date, like 15th, you are expecting you will be getting OC. So I think so most of us will be planning to do a Greh Pravesh during the Navratri period. So are you thinking like Yes. providing such kind of, We permissions? are thinking, we are hopeful that the corporations are also thinking in that way. पण प्रयत्न करू आपण. I respect the sentiments, but we'll try to adhere to those dates. Yes. हो ना, पण आता काय करू? आता हे सगळं झाल्यामुळे मला I need to, be a little careful. Yeah. Yes, sir. Please. तर पार्किंग बद्दल क्वेश्चन होता. आता हे ग्राउंड लेवलवर जे पार्किंग आहे त्याचा अनइव्हन डिव्हिजन झालाय, म्हणजे कुणाला कमी स्पेस आली आहे, कुणाला जास्त स्पेस आली आहे. राईट. म्हणजे 24 फीट असेल, आता मी सांगू, टोटल स्पेस जर 3 पार्किंगचा 24 फीट असेल तर 8 फीट सगळ्यांना यायला पाहिजे. हो. पण तसं नाही झालंय. कुणाला 7 फीट आलाय, कुणाला 9 फीट आलाय, कुणाला 8 फीट आलाय. तर त्याचा काही हो झाला अभ्यास माझा. सो आपण काय करणार आहे, सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू is that there are these brown colored tiles, right? There are, that you can see are markers, and typically after every 8 or 10 of these tiles you will have the brown colored tile. Now what we are doing is that we will be putting a thermoplastic paint on this. So that painting, when we are doing, it will so happen that if for some tiles that paint will be on this side, and on some tiles the paint will be on that side, but the measurement will be the same. Okay. Because what we are thinking is you have put the color tiles. So No. So that was only from That is an not the- aesthetic point of view, but we'll be doing the marking on it. So by Thermoplastic measuring, painting, yes, by measuring measuring. equal spaces, you are the Yes, marking the yes, space. equal. Okay, thank you. Right. Yes, sir. Sarvesh, Deepak here. Hi, Deepak. So my flat is 1907. Yeah. I have one doubt. In my parking, there is a one leakage, and it's not a simple leakage. It's a bigger leakage. So I have already complained that. Okay. So when it will be completed? We will. Where is your parking, sir? Which part? In bottom. Acha. We'll check it up. Sorry, sir. A1907. A1907. We'll have a look. Yeah. But it'll see. Another reason was that the epoxy grouting for these tiles were also pending. The grouting was also pending. But now this grouting is done. So as I mentioned, the cause, it will dry off over a period of time. But even if it doesn't, I've informed team, we will get it rectified. Okay. For sure. Thank you. Yes. Yes, sir. सर विजिटर पार्किंग साठी काही एक्सप्लोर केलेत ऑप्शन्स? हो 7-8 पार्किंग आहेत आपल्याकडे आहेत, आणि इनफॅक्ट देर आर सम additional parkings also that we can free up. Probably we'll explore it. So current अभ्यासप्रमाणे 7 आहेत, पण we'll try to have more. We'll try. सर 7-8 सर या 2 बिल्डिंग साठी पार्किंग, हो, विजिटर पार्किंग म्हणजे स्ट्रीट पार्किंग आहे, तेवढंच. पण त्याच्याहून जास्ती काय आपल्याला करता येणार नाही, कारण ऑप्शन होता, पण तोच आपण आता जेवढं पार्किंग आता आहेत तेवढेच आहेत. सो विजिटर पार्किंग आपण तेवढेच दिलेले. येस. ऍक्च्युली काय फ्लॅट लेवलमध्ये 2-3 चेंजेस आहेत. एक जो म्हणजे माझा जो फ्लॅट आहे A1208, त्याच्यामध्ये जो ड्राय बाल्कनी एरिया आहे तिथे स्लायडिंग डोअर दिलेला आहे इन्स्टेड ऑफ नॉर्मल डोअर. आणि मी काही लोकांकडे इन्क्वायरी केली, त्यांना डोअर प्रोव्हाइड केलेला आहे, बट माझ्या फ्लॅटमध्ये तो स्लायडिंग. कसं झालंय, जिथे एल शेप आणि पॅरलल ओटा असे हे 2 टाईप मध्ये आपले किचन ओटेज आहेत. सो जिथे पॅरलल आहे तिकडे विड्थ ऑफ ओपनिंग जास्ती आहे, सो त्याला आपण स्लायडिंग डोअर दिलंय. आणि जिथे एल शेप आहे तिकडे विड्थ ऑफ ओपनिंग डोअरच्याच एवढी असल्यामुळे आपण तिथे दरवाजे दिले. नाही, पण त्या केसमध्ये त्याला आउटर साइडला ओपनिंग आपण देऊ शकतो. जो इनर साइडला ओपनिंग, इन्स्टेड ऑफ इनर साइडला त्याला ओपन करण्याऐवजी आउटर साइडला ओपनिंग देऊ शकतो ना. आउटर साइडला नाही ना सर, कसं देता येईल आपल्याला, कारण आता आपण स्लायडर दिले ना तुमच्याकडे. स्लायडिंग असल्यामुळे ते ओपनेबल कसं करू, ओपन नाही करता येणार. नाही, स्लायडिंग नाही म्हणत, त्याच्या जागी डोअर नाही प्रोव्हाइड करता येणार का? नाही ना सर, कारण विड्थ मोठी आहे ना.
आपली विड्थ मोठी असल्यामुळे आपण तिथे स्लायडिंग दिलंय. ओके. अँड तो पण जो स्लायडिंग दिलेला आहे ना सर, त्याच्यामध्ये काय आहे, जे मॉस्किटो मेश आहे ना, ती इनसाइडला आहे. हो. त्याचं कारण असं होतं की मॉस्किटो मेश वाय इट इज केप्ट इनसाइड इज बिकॉज टू रिझन्स. वन, most of the times when you're putting it mesh outside, it becomes dirty because of the dust that is there in the atmosphere, and then it becomes difficult to clean and the entire building facade looks bad. Also, the glasses that we have are such that externally, if we are having a तो आपली जी light gold glass आहे, ते aesthetically also it looks good. That's why we've pasted the mosquito mesh inside. नाही पण सर ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये पण युनिफॉर्मिटी नाही, बिकॉज एक आमचा जो कॉमन ग्रुपमध्ये डिस्कशन होतं, तर बऱ्याच जणांनी जे फोटो टाकले त्यांच्यामध्ये ते बाहेरच्या साईडला सुद्धा आहे मेश, जशी लोकांना एक्सपेक्टेड आहे बेसिकली, आणि आज साईडला ग्लास लाईट, जेणेकरून जेव्हा आपण क्लोज करू इन्स्टेड ऑफ मेश ग्लास दिसेल बेसिकली, जो अस्थेटिक लुक चांगला देईल. पण कसं आणि आय थिंक हे म्हणजे हे तर चेंजेबल आहे सर, हे आतमध्येच आहे ना सगळं, सगळेच आतमध्येच सर. मला नाही वाटत बाहेर कुठे दिलेली आहे, सगळेच मेश आतमध्येच दिले. पण त्यातून काही असेल एखादा की जिथे बाहेर लावली असेल तर मग आपण चेंज करून मी घ्यायला सांगेन, काही प्रॉब्लेम नाही. जर बेसिक पर्सनल रिक्वायरमेंट असेल बाहेरसाठीची तर ते सर नाही करतायत, कारण आता ते ट्रॅक्स सगळे झालेले आहेत. सो आता मला ते ट्रॅक्स नाही चेंज करतायत. नुसतं शटर काढून लावणं हा विषय नसतो, त्याच्यासोबतचे लॉक्स असतात, त्याचं मेकॅनिझम असतं, त्याच्या मागचे बेरिंग्स असतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी चेंज करणं मला तर नाही जमणार सर. नॉर्मली सर ते काढून लावते, तर आय थिंक ते तेवढं टाइम कन्झ्युमिंग नाही आहे. नाही सर, मला नाही, खरंच नाही करता येणार. पण ते नका करू, त्याची गरज नाहीये, कारण आतल्या बाजूनेच राहिलेलं बरं, क्लिनिंगलाच तुम्हाला इझी राहील. कारण बाहेरूनची जी मेश आहे ना, ती ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम एवढी धुळाने भरते ती, कारण बाहेर एवढं धूळ असते आणि ते आतल्या बाजूने समजा बाहेरच्या बाजूने असेल तर इट गेट्स मेस्ड अप व्हेरी बॅडली. नमस्कार, मी आकाश हजारी, A2901. आता तुम्ही मेन्शन केलं की पॅरलल जर किचन ओटे असेल तर तिथे स्लायडिंग आहे, बरोबर असंच बोलले? साधारण मग आता एक्झॅक्टली ओके, आमच्या फ्लॅटमध्ये तसं नाही. नो नो आय चेक असं सगळीकडे नसेल, ओके. पण बाय डिझाइन येते. सो असं नाहीये की, कारण काहींचे सॅम्पल्स आहेत, काहींचे नाही आहेत. सो मे बी असेल, मे बी नसेल, आपण ते केस स्पेसिफिक बघता येईल. पण जे टाइम मध्ये ड्रॉइंग मध्ये जसं दिलं होतं तसंच आपण केलंय. बरं, आणि दुसरं एक केस स्पेसिफिक आहे, किचन ओटामध्ये व्हर्टिकल जो कप्पा आहे तो डॅमेज्ड आहे. तर मी फोटोज वगैरे शेअर केलेत, पण स्टील नाही, कडप्पाचं कसं असतं, लॉजिक असं आहे की कडप्पा जो येतो, तो कडप्पा एका सर्टन थिकनेसचा येतो आणि त्याच्यामध्ये थोडे जरी फार अंड्युलेशन असतील तरी तो डॅमेज ह्याला असं म्हणता येत नाही. कारण कडप्पा हा नॅचरलीच वेव्ही मटेरियल असतं, नॅचरल स्टोन, ते एकदम असं सुकसुकीत असं येत नाही. सो त्याच्यात थोडेफार मायनर अंड्युलेशन असतात. मेन कडप्पाचं जे फंक्शन असतं, ते मेन कडप्पाचं फंक्शन असतं की त्याचं वजन घ्यावं, जे आपलं किचन ओटा आहे, किंवा कारण तो स्ट्रॉंग मटेरियल असतो आणि त्याला आपल्याला इझिली, जसं मार्बलवरती कोरीव काम करता येतं तसं कडप्प्यावरती कोरीव काम करता येत नाही, बिकॉज इट्स अ व्हेरी हार्ड मटेरियल. So any form of leveling or grinding is not possible. Cutting you can do, which is why Kadapa is always used as a structural strengthening member on top of the granite. Granite आपण डायरेक्टली का नाही लावत, कारण ग्रेनाइट हा एकतर थोडासा ब्रिटल असतो आणि त्याला एवढी ताकद नसते टू गेट द फ्लेक्झरल मटेरियल. सो कडप्पा, हॉरिझॉन्टल कडप्पा आणि त्याच्यावरती ग्रेनाइट, हे असंच फिटिंग केलं जातं. सो बट व्हर्टिकल जे आहे माझं केस स्पेसिफिक, तिथे डॅमेज्ड आहे. नाही, डॅमेज सर त्याला डॅमेज नाही म्हणत, कारण त्याला मायनर एखादी हे निघालेली असेल तर इट्स नॉट गोइंग टू स्ट्रक्चरली कॉज एनी प्रॉब्लेम. पण इफ यू वॉन्ट, त्याला पॉलिश करता येतं आपल्याला. ओके. सो तुम्ही म्हणलात तर एक पॉलिशचा एक आपण अटेम्प्ट आपल्याला करतो. येस, आय विल रिक्वेस्ट दॅट. येस. मुव्हिंग ऑन. हा, येस सर. सर, माझं नाव प्रशांत पाटील, A2903. सर, मी सॉफ्ट पोझिशनचा आता विचार करत होतो. तुमच्या ज्या मेलनुसार 15 सप्टेंबरच्या नंतर तुमचे सॉफ्ट पोझिशन रिझ्यूम होणार होते, पण जसं मी आता डिस्कस केलं तुमच्या टीम सोबत, त्यांनी म्हणले की फायनल ओसीच्या त्यावेळेच पोझिशन भेटेल. सी काय होता प्रॉब्लेम असा आहे ना, की सॉफ्ट पोझिशन द्यायचा आमचा हेतू होता वेगळा, पण सर, तो काही टर्नआउट लोकांना- झाला तिसरा. काही लोकांना ऑलरेडी भेटलेला आहे, तर आता झालंय ते झालंय, आता परत ती चूक नाही करणार मी.
म्हणून आता सॉफ्ट पोझिशन्स बंद केले. आता डायरेक्टली ढोल ताशेंसहित परत तुम्हाला मी पोझिशन्स देऊ ओसीच्या नंतर. कारण काय होतं, अंडर कन्स्ट्रक्शन असेल ना, परत लोक फोटो काढतात, परत पाठवतात, परत पॅनिक क्रिएट होते. इंटेन्शन तर आमचं नाहीये तसं, पण ते अननेसेसरी थोडंसं त्या संदर्भात मिसअंडरस्टँडिंग होऊ शकतं. कारण कसं आहे की ह्या प्रोजेक्टवरती आम्ही भरपूर कष्ट घेऊन चांगलं काम करायचा प्रयत्न करतोय आणि ते शेवटच्या काळात ह्याच्यामुळे थोडंसं मग इट बिकम्स अ हार्ड बन. म्हणून म्हणलं की जे असेल ते ओसीच्या नंतर आपण करू, व्यवस्थित करू. मला तसं म्हणणं नाही, पण ओसीच्या नंतर आपण फुल फ्लेजेड पोझिशन चालू करू. हा सर, तुम्हाला जे काही करेक्शन्स करायचे होते ते टॉप टू बॉटम तुम्ही येत आहे. सुरू केलंय, हो. जसं की सरने बोलले की त्यांनी आता 14व्या फ्लोअरला आलेले आहेत. हम्म. तर आमचा याचा जो फ्लॅट आहे तो 16वा फ्लोअरती आहे. हो. म्हणजे तुम्हाला जे काही करेक्शन्स करायचे होते ते ऑलरेडी झालेले आहेत, हो. सो आय थिंक यू कॅन गिव्ह अस हो, सो त्याच्यात काय होतं, माय ओनली प्रॉब्लेम इन दॅट इज दॅट वेन यू आर डुईंग दॅट, तुम्ही समजा 10व्या मजल्यावरती गेले आणि फोटो काढला आणि पाठवलं की हे बघा, हे परत असं असं होतं, हे 10व्या मजल्यावरती आहे. तो फ्लॅट आमचा झालाच नाही अजून डिस्नॅगिंग करून, आणि समजा फोटोज पाठवले तर इट क्रिएट्स अ बॅड, मला परत त्याचा नंतर त्रास होतो. म्हणून सो पूर्ण बिल्डिंग करू, महिन्याभराचीच गोष्ट आहे. वी आर एक्सपेडायटिंग इट. आय अंडरस्टँड द रिझन टू गिव्ह अर्ली अँड क्विक, पण ह्या पर्टिक्युलर जो आमचा उद्देश होता सॉफ्ट पोझिशनचा, तो मला वाटतंय की कुठेतरी हे require a better internet speed and reliability in connectivity. That's one of the reasons why we have upgraded the entire Ashwin Encore system from a Cat 6 cable to a fiber optic cable. So entire network is already laid. We've already laid all the fiber optic lines. It's gone into your apartment. Going a step further, we have also fixed the router from our end. So router पण आम्ही लावलेला आहे. In fact, as we speak, the internet is also live. Internet ISP service provider पण internet service